Right arm around the wicket. Sir, bowler name சொல்லிட்டீங்களா? Sultan. Okay, Scorer ready? Play! Fine na. Fine na. I'm freaking So welcome everyone, and we are back in action for the second match of the day. Arun bowling on to Deepak. He's already bowled the first ball right on the money there, and now the accounts of the Lords 11 SANDOS Cricket Academy will keep moving now, as they are playing the first match now today as Crazy Crews. They have lost the first match versus Grandiose Cricket Club by a small margin, I would say, as of now, of 22 runs. And so they would look forward to go and rack up some runs here, as they are now batting actually. Crazy Crews of the back foot have pushed it slightly towards cover. And on the very same ground now today, they would look to do something different here. It's Lords 11 SANDOS Cricket Academy. They are batting first here. There's a 20 overs contest of this iTS 6 September 2024 series. Take inside edge. The ball is going towards the far leg fence, and I feel it's a boundary. Yes, it is a boundary. So it's a nice start here for the Lords 11 SANDOS. Fuller delivery on the leg side, wanting to play a drive, but it's a take inside edge and not where he was intending to play that stroke. But 4 runs nonetheless off his bat, and the score will move on to 5 for no loss in 4 balls for Lords 11 SANDOS. As Joker Surya 7 in his very first over now has given away 5 runs. But with the bat, while he was batting for Grandiose Cricket Club, he made 23 before being dismissed. A short delivery, good ball, very good ball in a very uncomfortable position was the batter there. Deepak Arun there now they're batting, and now it's rather uncomfortable. He has a sleeping place, but there is no one at backward short leg for that entangled kind of a delivery. But it was very much Fuller and made him look up. Last ball of the first over, and drive the angle bat towards that man at point. A single was being taken, and Arun is really not happy with the kind of running that he was trying to do. Arun Narayan 22 and Deepak are the opening batters. First over done, and Lords 11 SANDOS are 5 for no loss. पहले ओवर के बाद लॉर्ड्स 11 SANDOS 5 बिना किसी नुकसान के। श्याम के हाथ में है गेंद। पहले बॉल हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में खेला और ऑफ द मार्क, ऑफ द स्ट्राइक हो जाएंगे। वो नो बॉल भी है तो शायद ये फ्री हिट होगा। हाँ, पहले गेंद में नो बॉल, और बैट्समैन को दिखा के बोल रहे हैं कि ये फ्री हिट है। बैट्समैन ने भी एक्नॉलेज किया तो क्या हाथ खोलने का मौका मिल रहा है अभी दूसरे ओवर में। और श्याम सोच रहे होंगे कि ये आके
ये नजारा कुछ Let him over. सही नहीं दिख रहा है मेरे लिए। जर्सी नंबर 6 स्पोर्ट करते हुए और अरुण तू को बॉलिंग करेंगे। अरुण तू को फेस करेंगे। अरुण तू ने स्मैश कर दिया उनको कवर के ऊपर से और अगेन लास्ट मोमेंट पे वेरी वेरी लास्ट मोमेंट पे जाके उन्होंने टच किया बस बॉल को अपने बोले पैर हाँ से और सूर्या ये बोले ना फ्री हिट कोई बाउंड्री होगी नहीं। हाँ, देखिए कितना दूर से जाके उन्होंने गेंद को कनेक्ट किया है। बिल्कुल ऊपर से चली இந்த गई है। 4 இல்லையா और चार அப்படின்றது रन மாத்திரம் होते கன்ஃபர்மேஷனா होते ஃபீல்டருக்கு बस தெரியலையா கொஞ்சம் एकदम அதை மாத்திரம் लास्ट செக் பண்ணி मोमेंट पे சொல்லுங்க कुछ ये रिप्ले देखने को बनता है। देखिए बहुत ही ये थर्ड एम्पायर को जरूर गई है। ये पैर उन्होंने शायद शायद उनका जो टो है ना, जो उंगली है वो जो फ्रंट के फिंगर्स के जो जूते का भाग है वो शायद लग गया है रोप पे। जैसे वो स्टॉप करे। अगर उन्होंने देखा है तो उनको सिग्नल कर देना चाहिए था क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे ही चला जाता है जब ये ना ये ऊपर जाती है डिसीजन। हाँ एंड 4 रन ये देखिए 4 रन का यहाँ पे सिग्नल करते हुए तो पहला 4 रन आ गए बोर्ड पे लॉर्ड्स 11 संडोज के लिए और ये लोग पहुंच जाएंगे 7 बिना किसी नुकसान के श्याम के इस ओवर में। बाहर जाने दिया उस गेंद को। ये अच्छी गेंद है। ये थोड़ा सा बाहर हल्के आई थी। इसी के साथ उनको पकड़ के रहना चाहिए लेकिन ये फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा उसको नियंत्रण कर नहीं पाते तो इसलिए वो लाइन से कभी कभी भटक जाते हैं। 11 देखिए रन ऑलरेडी आ चुके हैं बोर्ड पे लॉर्ड्स 11 सनराइजर्स के लिए। अच्छी अच्छी गेंद अच्छी थी और ड्राइव भी काफी महफूज तरीके से उन्होंने खेला ऑल अराउंड द कार्पेट वो कवर्स की दिशा में। कोई रन नहीं। वो हल्के से यहाँ पे हवा भी चल रही तो उसका असिस्टेंस उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए शाम को। फिर से बॉलिंग कर रहा है उनको और देखिए लेग साइड में हल्के से फ्लिक कर दिया। बहुत जोर नहीं था उस पे। ये स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन जरूर चुराएंगे और दीपक आ जाएंगे अभी स्ट्राइक पे जो 2 नाबाद खेल रहे हैं 3 गेंदों में और स्कोर पहुंच जाएगी 12 बिना किसी नुकसान के। நீங்க முன்னாடி வாங்க सिंगल बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक हैं और ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे श्याम उनके लिए। बहुत ही छोटी गेंद बैकफुट पे जाके ऑलमोस्ट फ्रंट फुट पे जाके उन्होंने उसको पुल किया है। 1 रन मिलेगा स्क्वायर लेग की दिशा में और स्ट्राइक से चले जाएंगे और अरुण को देंगे जो 9 पे अभी खेल रहे हैं अपने नाबाद स्कोर 8 गेंद फेस करते हुए। ये प्रोजेक्टेड स्कोर आप देखेंगे ये 142 है। ये केविन ये क्रेजी क्रूज के लिए मैं बार बार केविन क्रूज बोलता रहता हूँ ये क्रेजी क्रूज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। आज पहला मैच उन्होंने दिन का उन्होंने यहाँ पे किया जो वो स्कोर प्लीज 22 रन से हार चुके हैं ग्रैंडियोस क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। तो 2 ओवर के बाद 13 बिना किसी नुकसान के लॉर्ड्स 11 संडोस और तीसरा मैच होगा आपका लॉर्ड्स 11 संडोस क्रिकेट एकेडमी वर्सेस ग्रैंडियोस। वो अच्छी मैच होगी क्योंकि ग्रैंडियोस बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और जो भी टीम आज यहाँ से जीत के जाएगी वो भी कॉन्फिडेंट होंगे। तो कल भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए थे। सारे मैचेस ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट तक गए थे। तो ये पिच जो है ना बैटिंग बॉलिंग सबके लिए कंड्यूसिव है। लेकिन परसों जिस टीम ने पहले बैटिंग की थी वो लेकिन 50 ओवर का कॉन्टेस्ट था। 407 रन मार दिए थे। 460 वेलोर क्रिकेट एकेडमी ने मार दिए थे और वो लोग ऑपोजिशन को उन्होंने 77 ऑल आउट कर दिया था। 383 रन के मार्जिन से जीत गए थे। ये विकेट कीपर के बिल्कुल पीछे चली गई है जोकर सूर्या 7 you are running center of the wicket अभी दीपक को so don't run like come side अच्छी रणनीति होनी चाहिए यहाँ पे।
ये आपके क्रेजी क्रूज के, सर क्योंकि इंगिटे वरुण इनको पता है सर इंगिटे वरुण सर ये मैच उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि अगर वो इस मैच को जीत जाते तो आज के दिन में वो लोगों ने 2 मैचेस खेले और एक एक हो जाएगा उनका, एक 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 लॉस एक विन। एंड वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे फिर आपके फ्यूचर के मैचेस के लिए। फिर से दौड़ के आ रहे हैं राउंड विकेट जोकर सूर्या, और उनके लिए हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में खेला, कोई रन नहीं है अभी। 14 इसी नुकसान के ये आज मैच का दूसरा मैच है ITS 6 सितंबर 2024 का। और देखिए अभी ये आपकी धूप बिल्कुल चली गई है, ये एक्चुअली थोड़ा हार्ड एंड स्वीट सिक जैसे वो बादलों के साथ खेल रहे हैं। जो कि सूर्या फिर से कवर के बाहर अच्छी सी स्लैश, और बाउंड्री ये ड्राइव उनको मिल जाएगी 4 रन। कितना सुंदर लगता है जब वो छोटी सी सफेद गेंद ग्रास को चीरती हुई जाती है बाउंड्री की तरफ। और ये स्कोर आप पहुंच जाएंगे 18 बिना किसी नुकसान के। ये देखिए कितना वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग किया था। ये उनको वेट किया, बस फ्रंट फुट थोड़ा सा आगे किया और बैट को दिशा दी उस गेंद को जाने के लिए। 4 रन। वो पहुंच जाएंगे अरुण अपने 13 निजी स्कोर में 11 गेंदों के बाद। चौथा गेंद तीसरी ओवर के लिए जोकर सूर्या स्टिमिंग कर रहे हैं और उनको वहां फिर से वही शॉट रिपीट करने की कोशिश। इससे पहले वाली गेंद इतने सुंदर सा बाउंड्री लगाने के बाद ये फिर से थोड़ा सा शिप अप कर रहे थे कवर की दिशा में ये मारने के लिए, लेकिन चूक गए वहां से और विकेट कीपर के सेफ दस्तानों में जाके ये गेंद रुकी है। लेकिन अच्छी लाइव पकड़ रखी है, उनका पेस जरूर है चोपड़ा सूर्या 7 का, तो इस पेस को अगर वो और यूटिलाइज करे ना तो इसलिए ये एक प्रीमियम फास्ट बॉलिंग सेगमेंट पे आ सकती है। ये देखिए अच्छी गेंद, ये गेंद अच्छी है, ड्राइव अच्छी है, लेकिन गेंद भी बहुत ऊपर रखा है उन्होंने, तो इसके लिए भी उनको एक ब्राउनी पॉइंट जरूर मिलेगा जोकर सूर्या 7 को। और इस सिंगल के साथ अरुण हो गया ऑफ द स्ट्राइक, दीपक आ जाएंगे स्ट्राइक पे। 4 रन बर्बाद है अपनी निजी स्कोर में 5 गेंदों के बाद। लेकिन यही होनी चाहिए अभी। लेफ्ट हैंडर आए इसका मतलब आप लेग स्टंप पे ना कराएं, क्योंकि होता है कभी कभी उसी हाथ उसी तरफ चली जाती है। लेकिन अगर ये फिर लेफ्ट हैंडर को वो बॉल किया ना तो फिर तो ये वाइड जाएगी। आखिरी गेंद तीसरी ओवर का। अभी थोड़ा सा छोटा, ये छोटी गेंद महंगी पड़ेगी दीपक को। उन्होंने थोड़ा सा एज कर दिया था, ग्लाइड करने की कोशिश की थी, हल्की सी बाहर का किनारा लगते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाएगी। पहला झटका यहाँ पे लॉर्ड्स 11 संदोस क्रिकेट एकेडमी को। हाँ सूर्या वो लोग हैं अभी 19, 1 विकेट के नुकसान के, और 3 ओवर भी हो गए खत्म। देखिए जैसे बोलता है बैंड योर बैक, उसने वही की जोकर सूर्य 7 ने। और ये देखिए फुट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस उसको हल्के से ग्लाइड करने की कोशिश की थी थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन एज डे बैठे। 3 ओवर के बाद देवक लॉर्ड्स कुमार 11 सैंडोज क्रिकेट एकेडमी 19, 1 विकेट के नुकसान पे। After 3 overs, Lords 11 Sandos Cricket Academy and 19 for 1. Deva Kumar N has the ball in his hand, driven very handsomely towards point. It was little bit in the air, but the fielder has done well to stop that ball. But I beg your pardon, it's Deva Kumar N who is at a non-striker end.
And I'm sorry, that's a kind of scoring graphics that has come out, that's actually confused me. It's actually Shyam who has the ball in his hand, and first ball and the second ball almost same, played in the same direction from Arun 22. He's on 14 not out of 15, has just lost his partner in the previous over, wanting to play a very, very delicate lead cut. Deepak all need to get a feather on the top edge of his bat and on towards the gloves of the wicket keeper. And Joker Surya 7 giving himself a second wicket. This is very well fielded at deep gully. So hat trick of dot deliveries, and the bowling has been very good. Up to the batsman is Sham. That's what they really need to do. It's nice breezy conditions. The sun is out again. You're bowling with a nice style. Your back is against the wall because they've lost a match earlier, before this match was being played versus Grandiose Cricket Club, and nothing much to do. They've got this, as the ball has been played very, very fine towards the final boundary. There is a fielder. He is fumbling. He is fumbling with the ball, as if he's cultivating the ball to come out of the ground. Just but finally manages to get a hold of the ball and throw to its the wicket keeper. It will be a single. It's 21 for 1. Arun 22 with a couple of runs off this ball. 16 to his name. Fuller delivery, wanting to drive. He was crazy. There you can see the smile. Shyam should have throw at the non-striker. The non-striker was really up there, Deva Kumar, and he doesn't want to go back to the pavilion without having faced a single delivery. He has seen much of this action of all the 5 deliveries of Shyam from the other end. Last ball to be bowled from Shyam to Arun 22. Little bit short, just open the face of the bat towards the point fielder. No run, just 2 runs of this over. 4 overs have been bowled, and Lord's 11 SANDOS Cricket Academy are 21 for 1. जोकर सूर्य 7 के हाथ में गेंद है. एक विकेट. ये विकेट फिर से आती पच गई है. यहाँ पे करने की कोशिश की थी. ओवर से गेंद छोटी नहीं थी. गेंद टू द बैट्समैन ड्राइविंग मार्क पे था. अब देखिए अरुण 22 देवा कुमार को यही बोल रहे कि ये देखो, ये ड्राइव करने की बॉल थी. आप उसको पोक कर बैठे. पहली गेंद थी और पहली गेंद पे जाते जाते बचे हैं ये. जोकर सूर्या 7 माइंड यू, उन्होंने पिछले ओवर में दीपक को चलता किया है. तो स्प्रिंगिंग द स्पेसर हो गई. ये ड्राइविंग लाइन में ड्राइव करके पॉइंट की दिशा में फिर से खेला. फील्डर मौजूद अभी भी ऑफ द मार्क नहीं है. तो दिस मैन इन ब्लू एंड व्हाइट, ये नीली और सफेद जर्सी में खेलती हुई चमकते रहते हैं ये लोग सनलाइट के नीचे, है ना. ये अगेंस्ट द डार्क क्लोथिंग ऑफ ग्रीन एंड नेवी ब्लू, आई बिलीव उनका लॉर्ड्स 11 संडोज क्रिकेट एकेडमी का. फिर से जॉन जोकर सूर्य इनसाइड है क्या? नहीं जी. ह्यूज अपील भी है यहाँ पे. शायद राउंड विकेट करके बॉल शायद लेग स्टंप के पीछे चली जाएगी साइड. और यही अंपायर का नजरिया था. शायद हाइट भी हो सकती है, प्लस बॉल शायद क्रेव करके शायद बियॉन्ड डाउन लेग्स चली जाएगी. तो इसलिए अंपायर ने उसको निगेट कर दिया है. और रिप्ले ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. ये आ रहा है जोकर सूर्य जंप करके बॉल. उनका एंगल देखिए, ये बिल्कुल लेग स्टंप पे करे तो ये अगर ये देखिए, ये लेग स्टंप पे है. हाँ, ये ऑलमोस्ट 4th या 5th स्टंप पे जाएगी.
तो इसलिए अंपायर ने इसको बोला नॉट आउट नॉट आउट। एज सुन एज वो बॉल वो पैड पे लगी, उन्होंने नॉट आउट बोला, क्योंकि ये अपना एक इंस्टिंक्ट होती है कि जैसे ही पैड पे लगती है ना, तो आप एक क्वेश्चन पूछते हो अंपायर के कि हाउ इज दैट, ये आउट है कि नॉट आउट। अंपायर बोलते हैं नहीं जी नॉट आउट नॉट आउट, यू कैन हियर दैट क्लियर कॉल, पूरा सुनाई दे रहा है वो। बोले गर्मी गर्मी के बीच में हमें भी ये बोल लेना चाहिए लाउड एंड क्लियर कि नॉट आउट नॉट சார் आउट। ஹெல்மெட் போட்டுக்குங்க देवा कुमार एंड சார் 4 गेंद भी சார் फेस कर दिया। अभी अब ये ஹெல்மெட் विकेट போட்டுக்குங்க कीपर சார் बहुत 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 आगे आ गए हैं वो। तो अच्छा उनको नो बोलिए प्रॉब्लम नो कि आप प्रॉब्लम, यू थोड़ा कैन सा स्टैंड. पीछे चले जाओ, क्योंकि ये पेसर हैं, तो आपको शायद वो इंजरी ना हो। फुलर डिलीवरी इनसाइड एज होके खेला, बैट डिफ्लेक्ट उनके हाथ में मुड़ गई थी। ये डीप मिड विकेट के क्षेत्र में बॉल जा रही है। ओ ओ ये थोड़ा सा उन्होंने अपना एक्रोबेटिक, अपना शायद अपना फुटबॉल और डांसिंग स्किल्स भी दिखाए वहां पे, और गेंद को बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे उन्होंने रोक दिए। ही इज अ मैन ऑफ मेनी स्किल्स, क्रिकेट, फुटबॉल, डांसिंग। देखिए देखिए अंदर जाए, यार ये देखिए फुट स्टेप्स देखिए उनका, नाचने का अंदाज बड़ा अच्छा होगा। ये शादीशुदा है क्या गर्लफ्रेंड है बाद में पता करेंगे, लेकिन ये सालसा वाला डांस जरूर अच्छा करते होंगे। रन जरूर बचा लिया है। आखिरी गेंद 5वें ओवर का। हाँ शॉर्ट बॉल पीछे से आके खेलने की कोशिश। एक ஓவர் சைட் சேஞ்ச் मिलेगा 5 ओवर के बाद। लॉर्ड्स 11 सनराइजर्स 23 एक विकेट के नुकसान पे। Kaushik has the ball in his hand. A little bit kind of a slinging action outside off stump, falling to Arun, who's on 16 of 19. And that ball has been collided towards the third man Slightly this way, direction for a single. And slightly, little bit. get off the strike and be on to 17 of 20. And Diva Kumar N was struggling a bit there, but finally managed to get off the mark. And he is now on a couple of runs after having faced 6 deliveries. And look at that, wicket keeper is really up to the stumps now, very slowly bolted from Kaushik. The ball has been driven towards the man at mid-off, beg your pardon. So no run. These are the Super League matches that are being played of this ITS 6 September 2024, with one more match to go in today's play, which will be between Lords 11 SANDOS Cricket Academy versus Grandiose. A little bit off the back foot, a bit of an hesitation, but as the ball clears that man at covers, a single has been taken. Deva Kumar will get off the strike and give it to Arun 22, who's playing some kind of a cautious innings here for Lords 11 Santos Cricket Academy, and would love to put things at bay. They're collecting runs at a healthy run rate of 4.55 at the moment. Kaushik again, full toss ball on the leg side, clipped it away. Is there a man at finally? The ball is very, very slowly going away, and it'll stop there.
as there is a fielder coming in. Probably they'll pick up the third run also. And then overthrow. The running and the calling are not getting in Sir. sync with each other. He is Balance, sir. furious at the striker's போல end, போல and இல்ல போல absolutely போல furious there. He's saying you really need to be clear with your calling. That's what probably he's trying to say. But a couple of runs there, I'm surprised. I'm sure they should have picked up the third run there also. But it's a couple of runs for around 22. It's little furious with Deva Kumar and was there at the non-striker end. Wrestling action outside Right of stump. ball. This will be avoid and well signaled by the umpire saying that I'm all in readiness to flap my fingers and fly above. But as an umpire, he needs to be grounded and do his duties right here on the cricket ground. Fifth ball of the sixth over, outside off stump again, wanted to slash it, but the ball is really not after there. It hasn't climbed up to a very healthy position to go and stroke it somewhere, pick up any amount of runs there. So the last ball of the sixth over will be bowled from Kaushik to Arun 22. Again, almost the same position, but this time he was in a much better position to play that stroke. And with an angle bat, he deflects that ball towards beyond that point fielder. A run will be taken. 6 overs done and dusted. 2 extras to the total. And Lord's 11 SANDOS Cricket Academy are now 28 for 1. As Kaushik will now started that over. As the ball, he's limping as the ball touched very heavily onto his legs, I believe, because that's Over. why. That's probably not good news for him and for the team. The ball has hit very hard on the toe end of the corner of Sir. his foot. That hurts. Ice If the bag sink இருக்கு அதை is எடுத்து hitting you, it will definitely hurt you, and probably it will call out for the medical assistance. Lord's 11 SANDOS Cricket Academy will remain at 29 for 1 after 6 overs. வெங்கட் Bowler Jafar. Okay. Jafar. ஆமா போடா Strike Devan. Correcta? So back to business again. Jaffer has the ball in his hand, and he will have to continue that ball, I believe.
because Kaushik at the other hand got a little injured with his ball and a flighted delivery. 29 for 1 for Lords 11 Sandos. There's a little bit of confusion there at the non-strikers end. Around 22 has been asked to go back to the crease at the non-striker end, as Deva Kumar was really not up to the task. That's a flighted delivery, and from Shafar. Is it a catch? Is it a good catch that he has completed? It's a very, very well done catch. Jafar picks up a wicket out of nowhere. Kaushik. Confusion. The batsman Deva Kumar and cannot believe what he has done. Flighted delivery on and off, wanting to play that drive, but hits that ball straight to that man who gleefully accepts that catch. And the second wicket is down for Lords 11 Sandos at 29 for 2 in 6.4 overs. There you can see he took that catch little inches above the ground. That is a very good catch. It's a very calculated catch, little low to his left, but he did very well to keep his eyes right there intact till the very, very last moment. That is a very good catch. Jeez, he'll celebrate Josie number 14. You can see his colleagues surrounding one colleague coming in from long off, and the bowler himself to congratulate him that you have done wonders to your fielding skills and have gone one notch higher by claiming that difficult catch. So first wicket will come up for Zafar, and Lords 11 Sandos Cricket Academy will be reeling a little bit at 29 for 2. Bowler coming right arm over. 2 more to come. Jafar onto Ashikas. Very short. It did spin, but it gave ample time and opportunity and room for Ashik Egg. As in the very first ball, it was juicy. It was very juicy. It was inviting, and to get off the mark with such a nice, easy delivery is something that he will be looking forward every day of till his cricketing career doesn't end. Jafar now on to around 22, was on 20 or 23, flighted delivery drives to almost that same fielder. Not to that fielder, it's almost little squarish. 7 overs done and dusted. Lords 11 Sandos Cricket Academy are 30 for 2. Same bowler. कौशिक आ गया अभी गेन करने के लिए. स्लिंगिंग एक्शन है. बहुत अच्छी सी ड्राइव. थोड़ी सी मिसफील्ड भी हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए गेंद अभी जाएगी लॉन्ग ऑफ के दिशा में. तो रुक गए थे देखने के लिए. जैसे ही देखा गेंद वहां से निकल गई है तो आराम से रिस्पॉन्ड किया कॉल को अराउंड 22 ने. और आशिक ऐसा भी पहुंच जाएंगे 2 of 2. नॉन स्ट्राइकर पे होंगे अभी उस सिंगल के बाद, और स्कोर पहुंच जाएंगे 31, 2 विकेट के नुकसान पे. और फुल आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड ड्राइव किया. कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रहे अभी, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल ओवर्स है. एंड सही भी बात है, ये रणनीति ऐसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए. अरुण 22 देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रिस्की शॉट्स नहीं है. आराम से 21 पे पहुंच गए 25 गेंदों में. तो ये पिच को भाव रहे हैं, देख रहे हैं आराम से. बैट लास्ट मोमेंट पे बैट आ गया. विकेट कीपर अपने ग्लव सर पे रखते हुए, उनको पता है अगर बैट नहीं लगती ना, ये ह्यूज अपील, ये तो बहुत बड़ी अपील होती, और अंपायर शायद अपना ड्रेडेड फिंगर ऊपर कर देते. आशिक फिर से फेस करेंगे कौशिक को. ये लेग स्पिन जैसा मारो ना, जैसे हाथ से छोड़ी थी ना वो दिख गई थी. ये लेग स्पिन जैसा स्पिन खाने वाला, थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद बाहर आ गई थी. और आशिक इसको आराम से उसको कवर की दिशा में खेला. 1 रन मिलेगा क्योंकि कवर थोड़ी सी पीछे थी. और अभी आसिक एस नॉन स्ट्राइकर पे चले जाएंगे. और लॉर्ड्स 11 संडोज क्रिकेट एकेडमी की स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 33, 2 विकेट के नुकसान पे. फुलर डिलीवरी, उसको वेट किया था, गेंद को थोड़ा सा पुश करना चाहते थे, लेकिन
लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो गेंद एक्चुअली वो नीचे रही और उनके अंदरूनी किनारा लगा बैट का। आखिरी गेंद कौशिक का 8वें ओवर का। काफी ओवर बहुत बेहतर इसको जाने दिया। अंपायर के पास देख रहे थे, अंपायर उनको देख ही नहीं रहे, अपने शू लेसेस को बांधने में वो लग गए और बैट्समैन को देखिए अभी भी वेट कर रहे हैं, क्या पता शू लेसेस बांधने के बाद वो अपने हाथ दोनों तरफ कर दे। लेकिन ये 8 ओवर हो गया है खत्म और लॉर्ड्स 11 सनराइजर्स 33 2 विकेट के नुकसान पे। After 8 overs, Lords 11 SANDOS Cricket Academy are 33 for 2, make it 34 for 2 with a single of that very first ball of Jaffar's second over. He has all the 2 wickets to his name, in fact, Jaffar. And what a great catch to get his second wicket in the previous over. It was a very low-lying catch that was being held at the cover. That fielder was very, very happy. He sat down there until his colleague came up to him to rejoice with that catch. And there you go. I love that finish of Jafar. While he puts his wrist on the way differently, it actually resemblance of Sri Lankan cricketer Mulitaran's. And always love that saying that name, isn't it? Murali Taran. It's a goat of Sri Lankan cricket. And of course, world cricket also wanting to sweep it outside off stump. It's in the air, but it will not find again. Oh, it's a misfield. It's a misfield. Probably that's a Vignesh, I believe. Just see number 2 there. Will not be very happy with that for the Jaffer. At one point, when you're trying to drive the runs, he throws up. He actually flings his cap as he was trying to retrieve that ball towards mid wicket. And now, actually, Jaffer not 2 wickets. Jaffer has 1 wicket to his name, 1 for 4. Drives the ball a little bit in the air, but I believe that it's kind of a bump as it hits the surface of the pitch, and it will go towards that man at long on. One more run to the to those runs at the scorecard. Last ball of the 19th over. Waits for that ball to come. Ashik rocks on backward, plays it towards that cow corner direction to pick up a single and also to keep the strike for the 10th over. 9 overs done and dusted. Lords 11 Sandoz Cricket Academy are 38 for 2. விக்கெட் வைட் நல்லா வந்து ஃபாஸ்ட் ஓடு போதும் A 9 over के बाद Lords 11 Sandoz Cricket Academy 38 2 विकेट के नुकसान पे और वेंकट आ गया बॉलिंग करने के लिए। बहुत ही सीरियस है अपने क्रिकेट को लेके, मैं बोल रहा हूँ। ये लास्ट मैच में भी देखा कि थोड़ा सा मिसफील होती है ना, उनको आ जाता है गुस्सा, तो फील्डर्स जरूर तैनात हो जाइए, पुल अप योर सॉक्स और कोशिश कीजिए कि कोई भी गेंद ना छूटे। उनका बॉलिंग एक्शन भी काफी अच्छा लगता है मुझे। ये थोड़ा सा याद दिलाता है मुझे, बहुत ही सिमिलर एक्शन तो नहीं है, लेकिन ग्रैम स्वान जो इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर थे और अभी एक अच्छे कमेंटेटर भी हैं। बहुत ज्यादा कमेंट्री स्टिंक वो करते नहीं है, लेकिन ग्रैम स्वान की याद दिलाते हैं जैसे वो बॉलिंग एक्शन फिनिश करते हैं वेंकट।
बॉलिंग करेंगे अरुण को। ये देखिए, हाँ हाँ White हाँ, ball. नहीं नहीं नहीं, ग्रैम स्वान तो प्रसन्न होंगे नहीं आपकी इस गेंद से। आपने बहुत ही बार बार फेंक दिया इनको, और फिर अंपायर को मौका हाथ फेराने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज उनके शोल्डर को। एक विकेट की बढ़ोतरी होती, एक रन की बढ़ोतरी होती हुई अतिरिक्त वाइड के साथ, और स्कोर पहुंच गया 40। 2 विकेट के नुकसान पे बैकफुट पे जाके हल्के से पंच करने की कोशिश का वर्ज पे, कोई रन नहीं मिलेगा वहां पे। ये अच्छी रन रीति यहाँ पे चल रही है, मैं बोलूंगा, लॉर्ड्स 11 सनडोज क्रिकेट एकेडमी का। 2 रन पॉइंट, 3 रन आगे फ्लाइट किया है इस गेंद को, फिर से ड्राइव करने की कोशिश वहां पे कवर्स की दिशा में। एंड आशिक थोड़ा सा शायद सीख रहे होंगे अरुण 22 से, और वो भी बोल रहे हैं कि आराम से, Three आपको more. कोई रिस्क लेने की 3 more. जरूरत नहीं है। दूसरी चौर से मैं देख रहा हूँ कि वो खुद है 25 नाबाद 32 गेंदों में, और ये प्रोजेक्ट स्कोर अभी 100 रन से बहुत कम है, लेकिन आई एम श्योर अगर ये पार्टनरशिप अच्छी रही, एक हाथ से उसको उसको स्लॉक स्वीप कर दिया है फाइनली की दिशा में, फील्डर आते हुए वहां पे, और आखिरी मोमेंट पे वो फील्ड कर देंगे। कपल ऑफ रन जरूर मिलेंगे यहाँ पे आशिक एस को। वो चले जाएंगे अपनी निजी स्कोर 8 पे 9 गेंदों में, और स्कोर का इजाफा होते हुए 43, 2 विकेट के नुकसान पे। पांचवा गेंद होगा वेंकट का। ये थोड़ा सा गेंद ना, ये लास्ट में से थोड़ा सा ढीली कर रहे हैं ये पहली ओवर, तो ये इतना प्रतीत नहीं हो। देखिए इस बार क्विक भी हो गया है। ये ज्यादा फ्लाइट नहीं कर रहे हैं, इस फ्लाइट की वजह से ही थोड़ा सा ना बैट्समैन को इजी मौका दे रहे हैं रन One more. बटोरने के लिए। तो अब 1 रन बटोर लिया गया है आशिक सॉरी अरुण 22 के द्वारा, पहुंच के 26 निजी स्कोर में 33 गेंदों में। आखिरी गेम है 10वीं ओवर का, जो बन जाएगा आपका मिडवे ऑफ द इनिंग्स। ये Money दूसरा sir. मैच है पहले इनिंग्स का। ये कट पे नहीं पड़ेंगे. AITS 6 सितंबर 2024 का ये आगाज होते हुए 20 ओवर का ये टूर्नामेंट है। इसके बाद और एक मैच बाकी है, ग्रांडियोस क्रिकेट क्लब वर्सेस लॉर्ड्स 11 संडोज क्रिकेट एकेडमी। आज इसी ग्राउंड पे, वेलोर क्रिकेट ग्राउंड वेलोर में खेला जाएगा, और सारे मैचेस का आंखों देखा हाल कमेंट्री के साथ आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशंस और अल्टीमेट क्रिकेट सीरीज में। स्पॉन्सर्स का नाम नहीं बता सकते हम तो, इसलिए हमें माफ कीजिएगा। जो भी आंखों से देख रहे हैं वही है, और ये अच्छा खासा एक एक पैसेज ऑफ प्ले चल रहा है। एक बॉल बाकी, एग्जैक्टली पता नहीं है कि आज ही थोड़ा सा पानी पीने की दरकार है, बहुत गर्मी है आज यहाँ पे। एक गेंद बाकी 10वीं ओवर के लिए, लॉर्ड्स 11 संडोज क्रिकेट एकेडमी 44, 2 विकेट के नुकसान पे। एक बॉल बाकी है अभी वेंकट का इस ओवर का। 5 गेंदों में 6 रन दे चुके हैं वो। बॉल कर रहे हैं आशिक एस को, हाइटेड गेंद हल्के हाथों से उसको Over. खेला ऑन साइड पे, और खुद वेंकट जाके उसको फील करेंगे। कोई रन नहीं। 10 ओवर के बाद लॉर्ड्स 11 संडोज क्रिकेट एकेडमी 44, 2 विकेट के नुकसान पे।
ஏய் கூப்பிடுறா உள்ள. அதுக்கு திரும்பணும் இல்லடா. திரும்பினாதான் Jaffer has the ball in his hand. It's not Jaffer actually. Yes, it's Jaffer actually. One for 6 to his name in 2 overs, bowling his third ball. Completes his wrist like a Mulyadharan, but that's not very impressive work from the wicket keeper. It was very, very low lying, but still it had to be stopped. But probably he was not in time to close the gap between with the legs. But that ball slightly and quietly slipped away, and so 2 runs with a thick inside edge of the bat. So runs will be added to Arun 22's account. He moves on to 28 of 34. But the finish that we're mentioning of Jafar, like Mulidaran's recent action, and you never know, he's MJ. It might be his initials names. That has been swept right from where the ball was deposited, taken on the full. Actually, there is a fielder being stationed there. And so a single been picked up. Score moves on to 47 for 2. And Zafar now on to 9 runs that he has considered of 15 balls that he has delivered. Slightly. Around 22. Slowly and steadily moving on to 29 of 36. On the other hand, Ashik is giving him a company as he has faced 10 balls for his 8 runs. And we'd love to move along because it's 10 overs now done. Flight delivery taken as a full toss at your drive and wanted to stop that ball in his run up was Jafar. Couldn't do that. Ball will go towards long off direction as the fielder will cut it off and give it back to the bowler. 1 run will be picked up. Around 22 will be a strike now. Score moves on to 48 for 2. Fifth ball of the 11th over. He was in a precarious position Ball of check getting பண்ண சொல்லுங்க. dragged on, or and at a very last moment puts up his bat because Check the ball பண்ணாங்கன்னு didn't, சொல்லுவாங்க. didn't kick Sir, off too well. illegal actionக்கு The shadows பேட்ஸ்மேன் of வந்து the clouds ஃபீல் looming பண்ணிருக்காரு. high above செக் the பண்ணி pitch சொல்றீங்களா? goes above us, and there you can see again the sun coming out very slowly. So this cat and mouse game between being played on the nature also plays because it looks very, very இந்த ஊர்ல magnificent தான் right அவர் on the ground, கேட்காம isn't இருந்திருக்கு it? போல. But with one more ball remaining in the 11th over from Jaffa, which will be the third for him. ஒரு பால் We'll தானே try and சுத்தி கையை சுத்தி break போட்டு விட்டுருங்க. this small little partnership is ஒரு this பால் தானே brewing கையை சுத்தி போட்டு விட்டுருங்க. here of Lord's 11 SANDOS Cricket Academy. சைட் ஆங்கிள் கொடுக்குவா, சைட் ஆங்கிள் கொடுக்குவா சார். Then that's the replay of the last ball. Waited for that ball to come. That ball suddenly jagged in. So he did very well to keep the batter really there in time. Within a fraction of a second, you have to do it. Ball won't ask you a question. Should I come in? Should I go out? You are the batter. You really need to judge that. There is probably a question probably being asked of that. I really don't know what has transpired, but one more ball is there of Jaffar's ball. We are trying to look at it replay again and again, making it reverse and then again making in full-time action. But we freeze this moment for our. I really don't know what the technical team is doing there, whether it's because of some calling in action or something. But reasons unknown why it was done so. But one ball is remaining. The projected score is still less than 90 runs for Lord's 11 SANDOS Cricket Academy. Last ball of the 11th over, off the back foot, little bit in the air as he was squaring after plated stroke on the onside. But 1 run will come to us mid-wicket region. 11 overs done and dusted. Over. Lord's 11 SANDOS Cricket Academy are 49 for the loss of 2 wickets.
11 ओवर के बाद 49, 2 विकेट के नुकसान पे। ये नुकसान और हो सकता है। फील्डर मौजूद, हाँ जी। ओहो, ये क्या कर दिया उन्होंने। उन्होंने सोचा कि बाउंड्री रेखा है वहां पे, कैच पकड़ लिया था, लेकिन फिर कैच को फेंक भी दिया है। ये हंसी के पात्र होंगे यहाँ पे। हाँ माजी, ये बहुत ही ऐसे कम देखने को मिलेगा। उन्होंने कैच ले लिया था, लेकिन उन्होंने फेंक भी दिया। सोचा कि बाउंड्री रेखा उनके पीछे है। बंदा हाँ, ये थोड़ा सा फनी मोमेंट बनता हुआ यहाँ पे। ये पिछला गेंद था, लेकिन ये रिप्ले तो देखना बनता होगा। 50 रन भी आ चुका है। वो जो मिडिल स्टंप से थोड़ा सा फ्लिक कर दिया उसको, और एक रन की गतिविधि होगी। लेकिन जो पहली गेंद थी उसमें तो ये कैच बिल्कुल अच्छे से उन्होंने लपेट लिया था। वेंकट को विकेट आते आते चली गई। और ये देखिए कितना ऊपर था, कितना ऊपर था। हम इसको तो बोल सके बेचारा, बेचारा अपने टीम के लिए आ आ आ आ आ आ आ ओ जी ना, वो पूरा सर पे हाथ रख के फिर सोचा कि अरे मुझे बॉल भी तो फेंकना है उनको। जर्सी नंबर 12। हम आपके साथ सिंपेटी कर सकते हैं, कैमरामैन जी उनको फोकस कर करके उनको और निराशा ना करे। बट ये उन्होंने कैच जरूर अच्छा लिया था, तो हाफ ब्राउनी पॉइंट्स उनको दे सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस के लिए 0 पॉइंट्स। वेंकट अभी फिर से बॉलिंग कर रहे हैं उनको। आशिक को 10 नाबाद है 13 गेंदों में। प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी 89, काफी लंबे टाइम पे। लेकिन वेंकट को एक विकेट मिल सकता था पहले गेंद पे। आशिक है इसको शॉडल भी इनको थोड़ा सा पैडल स्विप कर दिया ऐसे पीछे। फाइन लेग की दिशा में कपल ऑफ रन जरूर मिलेगा। गेंद वहीं पे खड़ी हो गई है। जैसे विकेट कीपर को फेंक देंगे। ये इजी ये था, लेकिन एक रन। ओह, ये तो 2 रन होनी चाहिए थी। ये तो 2 रन होना बनता था, लेकिन उन्होंने लिया बस 1 रन। 4 रन आए हैं वेंकट की इस ओवर से। और आखिरी गेंद अभी वो फेंकेंगे 12 ओवर का। स्कोर है 54, 2 विकेट के नुकसान पे। वाइड बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, वेरी आउटसाइड ऑफ स्टंप। पूरा लास्ट मोमेंट में देखा, 1-2 सेकंड उन्होंने सोचा और फिर बोला नहीं, ये बाहें फैला सकते हैं हम इस गेंद पे। तो अतिरिक्त रन आते हुए वाइड के रूप में स्कोर 55 पे पहुंच गया 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद हो सकता है, आखिरी गेंद होगा। हाँ, ड्राइव पकड़ने की कोशिश, थोड़ा सा स्ट्राइकर के साथ उनका थोड़ा सा हल्का सा घमासान, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों ने थोड़ा सा हाथ मिला के एक दूसरे को सहायता किया। 12 ओवर के बाद 55 पे 2। लॉर्ड्स 11 संडोस क्रिकेट अकेडमी। There you can see, he's just sitting there. Venkat saying, "Can you give me a hand, please?" And the batsman obliges, saying, "Yes." On the field, off the field, I'm always there for you. It's always good to see such sportsman spirit. So well done, cricketers, both Venkat and I believe that was around 22 players who lended him a hand. At the moment, 56 for 2 for Lords 11 Santos Cricket Academy. You can see the replay again. அந்த லைன் தானே விஜய் பாய் That's from this ball actually. Jaffer has the ball in his hand, and his last over to continue. The bowling to around 22 and flicks it away. Trying to flick it on the gap. There is a fielder station there. He'll move on to 33 or 41 in the score on to 57 for 2. 1 for 13. Same. Jaffa. Right in delivery outside off stump. It goes rocks off the back foot to play that stroke very well. And as telling, Jaffa reminds me of a former India opening batter. Wasim Jaffer is also very much
prevalent on social media for his sarcastic remarks sometimes, which doesn't boil down too much with former White ball. England cricketer Michael Vaughan. Those friendly banters also helps a very nice cricketing platform to exchange, and along with the fans who supports and who doesn't sometimes also doesn't do so. It's been flicked off from outside off stump. He's fighting the ball, Jaffa, but he's also allowing the room so much to go off the back foot and flicked away. But look at Arun 22. He's very much unflattered with the kind of events that's happening. That ball has been flighted after a long time. We're seeing a batsman leaving the ball and off an off spinner. And in 2020 cricket, this is very nice to see. Arun 22, come on, don't tell him anything. Ashish, as that ball has been flighted, was about to shaping up to take it on the full to deposit it towards mid wicket, doesn't make the connection. The wicketkeeper also fumbles a little bit, but no runs, nothing in that ball. Last deliver of the 13th over. There you go. There you go. He really felt there Over. was something in it. But 13 overs has been done and dusted. Lord's 11 Sandoz CA Cricket Academy, is it? They are 60 for the loss of 2 wickets. Same 7 bowler more Venkat. overs remaining versus Crazy Not Crews. Same gun, sir. वेंकट कंटिन्यू करेंगे अपनी गेंदबाजी। वेंकट की ये गेंद उठा दिया है, कोई फील्डर है नहीं वहां पे, बिल्कुल वैकेंट है, अभी भी कोई नहीं है, वो बिल्कुल फील्ड स्प्रेड हो चुकी है। और 14 ओवर के लिए एक रन जरूर छुड़ाएंगे पहले गेंद पे वेंकट का। तो चाहेंगे कि ये पार्टनरशिप थोड़ा सा टूटे अभी, क्योंकि धीरे धीरे ये थोड़ी सी अच्छी होने के कदर पे लग रही है। अरुण 22 और आशिक एस का ये वेंकट फिर से, ये देखिए, ये तो बिल्कुल आपने अपना पैर वहां तक ले ही नहीं है, आपने जमा दिया था अपने आप को वहीं पे खड़े खड़े, उसको बस खेलने की कोशिश की थी, तो कुछ मिलेगा नहीं है वहां पे, उसे विकेट कीपर ही हेल्प कर जाएंगे। फिर से ये पैडल स्विप ये डायरेक्शन दिया था। ओ बेहतरीन फील्डिंग, एक हाथ से रोका उन्होंने, ज्यादा इधर उधर जाने की कोशिश नहीं की थी। तो बोले मैं हूँ वहां पे वॉल की तरह, तो एक हाथ बस उन्होंने निकाला और गेंद चिपक गई उनके हाथ में मैग्नेट की तरह। लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। आशिक एस को पहुंच गया 14 अपने निजी स्कोर में 21 गेंदों में, और अरुण 22 अभी फेस कर रहे हैं 35 उनका निजी खाता पे है। 43 गेंद White ball. फेस करने के बाद फिर से बाहर, इस बार थोड़ा सा नियंत्रण खोते हुए गेंद पे एक अतिरिक्त रन आ जाएंगे वाइड के रूप में। स्कोर का इजाफा होते हुए ये लॉर्ड्स 11 संतोष क्रिकेट एकेडमी का 63 तो नुकसान पे वाइड किया है, उसको व्हाइट करके उठा दिया है मिड विकेट के रीजन में, और फील्डर मौजूद, और फील्डर पकड़ भी लेंगे कैच को। ये पार्टनरशिप टूटता हुआ और अरुण 22 चलते बनेंगे अपने कलीग्स को ज्वाइन करने के लिए। तो दोनों ओपनर्स अभी बैक इन द हाट, ये काफी देर से वो अपने बैट को कैरी कर रहे थे, और वेंकट को मिल जाएगा अपना पहला विकेट, एक विकेट 15 रन देने के बाद। और लॉर्ड्स 11 संडोज क्रिकेट एकेडमी 63 2 विकेट के नुकसान पे।
वेंकट ने दे दिया है एक ब्रेक थ्रू 63 3 विकेट के नुकसान पे। हाँ, फिर से ये इनसाइड एज होके स्टंप्स पे लग सकती थी। काफी रूम ज्यादा दे दिया था बिनु कोशी ने। मुझे याद है लास्ट मैच में वो बिनु कोशी एक्चुअली ये लास्ट मैच वो खेलने गए थे, एक सफेद हेलमेट पहन के आए थे कोई एक, उनका नाम भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा था। अभी एक नाबाद है, एक गेंदों में नॉन स्ट्राइकर पे होंगे, आशिक ऐसे फेस करेंगे वेंकट को। हाँ, ड्राइव कर दिया है लेकिन उठा के मारा है। ये लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी मौजूद जरूर है, थोड़ा सा कंट्रोल होके खेला उन्होंने ये शॉट। दूसरी दूसरा रन, अभी तीसरे रन के लिए भी चले जाएंगे। हाँ, जिसमें से भी एक रन था ड्राइव पे, उन्होंने दूसरा रन जल्दी से विनू कौशिक ने बोला कि मैं जाऊं, लेकिन फिर आशिक आयस ने बोला चलिए आप आ ही जाइए, तो उन्होंने ये जरूर ले लिया है और 14 ओवर का हो गया है खत्म। लॉर्ड्स 11 सैंडोस क्रिकेट एकेडमी 64 3 विकेट के नुकसान पे। Vicky Vignesh has the ball in his hand. It will be a very new over for him. Vinu Koshi at the non-striker has joined his partner Ashik as in the last over. Vicky Vignesh will be bowling the 15th over. Drives a little carefully, half-hearted stroke, I believe. It has gone to Venkat, and he sports that red bandana and the specs also. So that name has gone really down very well in the memory. And he looks to be a very nice, accomplished cricketer, Venkat. Dot delivery, Vicky Vignesh again running. Dead ball. Dead ball, sir. Dead ball, sir. The ball actually got stuck. Sir, dead ball, sir. The ball got stuck in that clothing, so it will be a dead ball. So yesterday also I saw that the ball got stuck and it was a dead ball. But that time that shot was from a left-hander, if I remember correctly. It was hit very hard. It got stuck. Now since it's a dead ball, they will again cross numbers because they took a single. So again, Ashik S will be on strike. Vicky Vignesh. Bowled. He is bowled him right to the gate. Was Vicky Vignesh gets a wicket to his name in the very second ball, wanting to play against the seam of the ball, and the ball will go right between his pad to dismiss the stumps. That was a goner. That is not a pretty sight as a batsman to see your stumps getting rattled. White ball. இங்கே அடிக்கணும் இங்க வருதுடா வாய்க்கு எடுத்துக்கிறடா
பால் அடே அவ்வளவுதான் நல்ல பால்ரா நம்பிட்டோம்டா நல்ல பால் உண்மையிலே நல்ல பால் சூப்பரா What the hell you did in the first match then? Where this ball was? Shivu. Shibu. Full balls, right? Shibu. ரெண்டா பேட்ஸ்மேன் சிபு. பால்ஸ் ரிமைனிங் எத்தனை இருக்கு? ரெண்டு பால் ஒரு பால் தண்ணி அப்புறம் ரெண்டு பால் ரெண்டு கொஞ்சம் கவர் பண்ண ரெண்டுமே ஆகாஷ் நீ கொஞ்சம் ரெண்டுமே கவர் பண்ண பேட். ஓவர் தண்ணி வாங்கிக்கோங்க. After 15 overs, it's 70 for 5 for Lords 11 SANDOS Cricket Academy. I believe they've done very well, relatively very well. As Vicky Vignesh 2 for 3 in his 1 over, he's completed that, and proceeded score is still less than 193 with 5 more overs now remaining. And so 5 more, so that means 30 more ball now remaining here. But they have not been shaping up very well because the run rate has actually gone down at less than 5 runs per over. Binu Koshi, 1 not out of 1. And Venkat will have the ball in his hand. He was shaping up to pick up 2 wickets, but nonetheless, he will have some good numbers up his sleeves. 1 for 19 in 3 overs. It's been economical despite giving away 19 runs. But it will not be under much pressure here. Will this crazy cruise. They know this is an important match for them, having lost the first encounter versus Grandiose Cricket Club by 20 runs. It was not a very a big defeat, but then a defeat is a defeat. If they can win today, then they will feel that they have done relatively and fairly well to be alive. Ole coming right arm over. Fast. But for Lords 11 SANDOS Cricket Academy, after this match, they have to face the champion of today's match, of the first match, Grandiose Cricket Club. Onto him. He climbs onto it. There is no fielder there, and will be playing it towards the long off fence for a few bounces onto those boundary. And that is a nice stroke. Push back, goes back, rocks very, very much back, gives himself so much room to play that ball inside out, and 4 runs being awarded to his name. As the score moves on to 74 for 5, and Binu Koshi on to 5 of 2. Venkat again.
First ball boundary. Almost a repeat of that. This time he goes towards the other end of the long on fence, and this time it's 4+2, 6 runs to his name. Score will go on to 80 for 5, and Venkat is now giving some looseness, some freebies onto Vinu Koshi. He moves on to 11 of 3. This is really might just change the fortune of this match, because they're looking a little slow. But with this thunderous stroke of the bat of Vinu Koshi, a 4 and a 6, it might just look very different with 4 more balls now remaining in this Venkat's over. Look at that. Venkat has gone on to 29 with those 2 strokes of the bat of Vinu Koshi. Just have a small chat with the batter. But the ball is waiting to be retrieved. Lords 11 SANDOS Cricket Academy are 80 for 5. Yeah. The ball has come back, probably a new one, I believe, because the red ball must have got lost. Third ball of the 16th over to be bowled from Venkat. Again, gives some room, didn't connect too well. The steps have been quickened from that fielder long off. And at one point, he was thinking that it may be slow and steady. But looking at how the jogging and the running has been between Shibu and Vinu Koshi, they shouldn't be lethargic in picking up the balls. Fourth ball of the 16th over doesn't fly too much. It has gone right through the gap. But how did that miss? How did that ball spin and miss the stumps? Venkat hands on head. Just scratch out, just pull out a hair, just think through your nose of how that ball spun and going through the gap and didn't kiss the stumps. But he will survive. Shibu shapes up, slog sweep, it's in the air. There is a fielder. Oh, he waits that fielder. And it will go towards the mid region for a lovely boundary. This is an expensive over from Venkat. 2 boundaries and a huge 6 from the bat of Vinu Koshi. But this time, this score, this shot has come off the bat of Shibu. He'll get off the mark and he'll move on to 4 of 4. That fielder would have done probably a little better work, as the figure of Venkat has little been disturbed and tampered with at 1 for 34. The last ball of his 4th over of his spell. I really don't know what he must be going on his mind, because this has been an over that can be forgetful for him. Otherwise, he's a good bowler. He's not a bad bowler. 15 runs have come of this. Previous to them, it was 1 for 19 in 3. Tuning in to bowl the last ball of the spell, and the 16th flights that ball, and just at the lower end of the corner, it will go towards the same fielder. He probably is Vignesh, if I'm not wrong. 1 run will be taken. 16 overs done, and dusted. Lords 11 SANDOS Cricket Academy are 86 for 5. सोलह ओवर के बाद लॉर्ड्स 11 संतोष क्रिकेट एकेडमी 86 5 विकेट के नुकसान पे, और श्याम के होगी हाथ में गेंद। 2 ओवर के बाद कोई विकेट नहीं उनके नाम, 10 रन कंसीड कर चुके हैं। शिव को बॉलिंग करेंगे।
हाँ देखिए देखिए वहां पे निक, शायद ऐसा लगा निक था और विकेट कीपर ने उसको फंबल कर दिया पहले गेंद में। नहीं, जो भी है वो डॉट डिलीवरी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद शाम को मिल सकता था उनका पहला विकेट ये तीसरी ओवर पे पहले गेंद में। हाँ फिर से वही वही शॉट, फिर से वही शॉट, खड़े खड़े खेल रहे थे और बीनू कोशी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गेंद तक आके उसको टैप करके एक सिंगल लेने की कोशिश लिया जाए। लेकिन रन में थोड़ा सा बढ़ोतरी जरूर हुई है क्योंकि पिछला ओवर जो वेंकट का था उसमें 15 रन आ चुके थे। श्याम फिर से उसको, हाँ इस बार स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की थी अंपायर एंड डिसीजन आउट स्टंपिंग हो चुका है। स्टंपिंग ये मात्र கொஞ்சம் செக் प्रश्न பண்ணிக்கங்க उठा था बैट्समैन स्क्वायर लेग अंपायर का, लेकिन विकेट बैट्समैन कीपर ने किया वेट பண்ணுங்க बहुत ही लाजवाब स्टंपिंग यहाँ पे और छठा विकेट का हो गया है पतन लॉर्ड्स 11 सैंडोस एकेडमी 86 फॉर 6। हाँ क्या स्टंपिंग है, क्या लाजवाब स्टंपिंग है, कितना बढ़िया एक्रोबेटिक फास्ट क्विक रिफ्लेक्सेस। ये देखिए जैसे पीछे आई गेंद, ये देखिए बहुत क्विक थे, ये तो बहुत क्विक थे। ये एमएस धोनी बहुत प्रसन्न होंगे ये वीडियो जब देखेंगे। ये देखिए थे ही नहीं, ना पैर थी ना बैट थी, तो ये चलते बनिए आप। 86 6 विकेट के नुकसान पे लॉर्ड्स 11 सैंडोस क्रिकेट एकेडमी। Why did you block my view? श्याम उसका गेंद कंटिन्यू करते हैं लेकिन वाइड का इशारा हो जाएगा यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर ये जाके। Wide க்கு actually ये DRS अच्छी கிடையாது. वो नहीं है। He actually blocks my view. आनंद विजयन आ एकदम गया है वेस्ट है उनका நீங்க ராகுல் சார் சுவிட்ச் ஓவர் ஆறாருன்னா பவுலர் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் இப்படி நகர்ந்து வந்து நிற்கும் போது பால் போச்சுன்னா ரைட்டு அதுதான் சொல்றேன் அவங்க டெலிவரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஆஃப் ஸ்டம்ப் போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு கிடையாது. not a wide. Bowler has blocked my view. சுவிட்ச் ஓவர் ஆகக்கூடாது, அங்க பவுலர் என்ன 99 गेंदों में 87। थोड़ा सा विचार विमर्श करते हुए उस कुछ तो है वहां पे जो इसके लिए वजह से, हाँ जी वाइड वाइड करार दिया गया है उस गेंद को, बहुत ही बाहर थी ये। तो ये सिग्नल वो लेते हुए एक रन का इजाफा हो चुका है 87 6 विकेट के नुकसान पे लॉर्ड्स 11 सैंडोस क्रिकेट एकेडमी। हाँ ड्राइव करने की कोशिश बाहर जाके, यूजुअली जो आप देखते हैं टेलेंडर्स के लिए तो वही था यहाँ पे श्याम सर ये ना सीमा पे भी ड्राइव करने की कोशिश मिस कर गए विकेट कीपर के सिंगल स्थानों में।
लेकिन फ्लैश ऑफ द स्टंप्स वो स्टंपिंग काफी क्विक थी। ये वाइड बॉल से पहले जो उन्होंने स्टंपिंग की ना, वो तो कोई मौका ही नहीं था बैट्समैन को, ना पैर पीछे रखने के लिए, ना बैट। उठा के मारा है, स्लैश करके मारा है, फील्डर मौजूद वहां पे है, लेकिन उनसे थोड़ी सी शायद दूर चली गई है, लेकिन कपल ऑफ रन जरूर मिलेंगे। 2 रन वापस आने का उनका मौका मिल गया, अनविजन हो जाएंगे ऑफ द मार्क वो कपल ऑफ रन से। लेकिन ये बहुत मिक्स्ड ओवर है, 3 डॉट, विकेट वाइड, कपल ऑफ रन यहाँ पे, और इन्होंने 3 रन बस दिए हैं ये श्याम ने। 1 विकेट अभी मिला है इनको उस स्टंपिंग बदौलत। आखिरी गेम 17 ओवर का, बैकफुट पे जाके हल्के से पंच किया उसको, पॉइंट दिशा में, कोई रन नहीं। 17 ओवर के बाद लॉर्ड्स 11 सनडोस क्रिकेट एकेडमी 89 6 विकेट के नुकसान पे। Kaushik has the ball in his hand, shaping up the ball, the 18th over, wanting to hike it above mid wicket. Doesn't get the connection. He's a tall guy, mind you. Binu Kaushik has hit 1 6 and 2 4s to get his ball rolling in the over. So he can hit the ball very, very hard, mind you. There you go, hitting the ball very hard. That's a straighter boundary. And by the time the fielder comes in running from long off, that ball will cross over to a straight boundary for 4 runs. He hits the ball very, very hard, doesn't he? And that shot again is a perfect example of how he can hit the cricket ball. Right there, clears his left leg, gives himself some room, and that ball was deposited straight down the ground for 4. 93 for 6 now, Lords 11 Sandos Cricket Academy. Kaushik again gives himself some room. This time the ball was little slower on to him, and it's along the carpet. A few bounces on to that fielder at long on for a single. Vinu Kaushik will go off the strike. He'll be on. Oh, he doesn't take a single. He is still there on strike. Again, he doesn't want Anand Vijayan to face any of those, and that's why it's a back-to-back dot deliveries. Despite that ball going towards the far corner on long on, he decided not to take that run and to keep the stroke onto himself. Again, onto Kaushik, outside off stump, wanted to slash it over point and gully. He doesn't get the connection, but he won't mind a bit. He wants to hit that ball as much as hard as possible and make that ball go across the ropes. One more ball now in remaining in 18 over. He would look to pick up a single and retain the strike for the next over. Full toss delivery on the leg side. That should be a wide now. And the arms of the umpires comes out perpendicularly again to signal a wide. So an extra added to the total, and the score will now move on to 95 for 6. A run and a wide also. Now Anand Vijayan will have the opportunity to face this ball, because if we can keep this at bay, then Pino Koshi will come to strike the next ball, wanting to take that run. But Vino Koshi will say, even if there's an opportunity, I'll not go because I want the strike for the penultimate over. It's 18th over, done and dusted. Lords 11 Sandos Cricket Academy are 95 for the fall of 6 wickets. बीनू कौशिक 16 पे बैटिंग करें, 9 गेंदों में। श्याम आ रहे
उनको रूम बना के खेलने की कोशिश की थी, स्टंपिंग की अपील स्क्वायर लेग की तरफ, और ये हो गई है स्टंपिंग। बीनू कौशी चलते बनेंगे। वो वहां पे खड़े खड़े सोच रहे हैं, अपनी शायद पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे कि हम थर्ड अंपायर के पास जाए कि नहीं, और ये चली जाएगी क्योंकि ये बहुत ही संगीन और बहुत क्लोज मामला हो सकता है। हाँ, ये एंगल देंगी, ये बेहतरीन एक एंगल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे देखिए। ओ, ये तो बिल्कुल रिपीट, ये तो बिल्कुल रिपीट हो गया है, ये तो बिल्कुल रिपीट हो गया पहला विकेट की जैसा। बस उनका बस कद लंबा है, उनका बस कद लंबा है। ये तो बिल्कुल रिपीट था। ये देखिए क्रॉस हो गया उनके उनके लेग्स। बाय द टाइम उनका बैट नीचे आई थी, वो तो बिल्कुल ही उनका बेल्स नीचे ही चला गया था। तो ये एक इजी डिसीजन होगा, इसमें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 7वां विकेट उनको बोल ही दिया गया कि आप चलते बनिए, 7वां विकेट चले जाएगा। एंड वी, हाँ, वी वाइट दे दिया गया ऑफिशियल सिग्नल। लॉर्ड्स 11 सनडोज क्रिकेट एकेडमी 95, 7 विकेट के नुकसान पे। तो शाम को मिल गया है अपना दूसरा विकेट। सो 2 विकेट जो गए हैं, दोनों ही स्टंपिंग होके गए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन पे गए हैं। बैट और जो उनका पैर है टाइम पे अंदर नहीं डाल पाए, और जो विकेट कीपर है वो तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर ही नहीं थे। वो बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है स्टंपिंग के मामले में। श्याम मान, उनके विकेट कीपिंग भी पीछे बहुत ही अच्छी हुई है। ये, हाँ, वो जब भी बॉल पीछे जाता है ना, बहुत बार वो तो 1 2 3 इंस्टेंस ऐसा हो गया कि जहाँ पे उन्होंने शायद रोक नहीं पाया, अदरवाइज तो वो काफी अच्छा विकेट कीपिंग दर्शाया है यहाँ पे उन्होंने क्रेजी क्रूज के लिए। इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, ये जीतना जरूरी है उनको। थोड़ा सा बैक फुट पे जाके हल्का सा पंच किया, कवर्स की दिशा में 1 रन मिलेगा। ये जल्दी ही कंप्लीट किया उन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा संदिग्ध मामला हो सकता था, क्योंकि गेंद बिल्कुल स्ट्राइकिंग इन पाया गया था कि आई थिंक वो शॉक भी हो गए होंगे कि जनरली ये लोग नॉन स्ट्राइकर पे फेंकते हैं, लेकिन ये थ्रू जल्दी से स्ट्राइकिंग इन पे आता। लेकिन 1 रन जरूर कंप्लीट करेंगे, अनविजन आ जाएंगे स्ट्राइक पे। बहुत स्लोअर डिलीवरी था, ये उठा के मारा है, ऑफ स्टंप के बाहर से उठा के मारा, और 4 रन भी मिलेंगे। और इसी के साथ 100 रन का आंकड़ा भी पूरा होते हुआ लॉर्ड्स 11 सनडोज क्रिकेट एकेडमी फॉर चले जाएंगे 101, 7 विकेट के नुकसान पे। और 3 गेंदे शेष इस पेनल्टीमेट ओवर 19वां ओवर में। लेकिन राहत के सांस जरूर लेंगे लॉर्ड्स 11 सनडोज, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि शायद 90 भी ना बने, लेकिन अब ये कुछ छोटे मोटे जरूर लगा है। तो ये स्कोर में थोड़ा बढ़ोतरी होते हुए। चौथा गेंद फुल टॉस, ये कहाँ चली गई, नो बॉल का इशारा ऑलरेडी आ चुका है अंपायर से। गेंद बिल्कुल पीछे चली गई है और सीमा रेखा के बाहर बनाते हुए 4 रन। ये नो बॉल 4 रन, बाउंड्री, नो बॉल। हाँ, आप सुन सकते हैं, नो बॉल एंड बाउंड्री। तो ये 5 अतिरिक्त रन आज ये बहुत ऊपर था। ये तो किसी भी लेवल पे ये हो जाएगा नो बॉल। स्टैंडिंग अंपायर और वो स्क्वेलिंग अंपायर दोनों ने हाथ फैला दिया था एक हाथ से बोलने के लिए कि ये नो बॉल है। तो ये फ्री हिट जरूर होगा, शायद हिट का ही मौका है। श्याम बोल रहा आनंद विजन, हाँ, स्मैश करके फिर से खेल दिया है कावर के ऊपर से, और ये फ्री हिट दंडनाता हुआ एक बाउंड्री आ जाएगी तो कॉस्टली हो गया है ये ओवर। पहला ओवर में विकेट, फिर वाइड, फिर एक सिंगल, फिर 4 रन, फिर 4 रन और नो बॉल, और फिर से 4 रन। तो ये बहुत ही कॉस्टली ओवर हो गया अभी उनके लिए।
110 विकेट के नुकसान पे तो ये ओवर थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट जैसा हो गया अभी, लेकिन क्रेजी क्रूज थोड़ा सा ये शाम के ओवर में ये रन थोड़ा सा लीक जरूर हुआ है। 5वां गेंद, हाँ ये फुल टॉस को भाप नहीं पाए, ये थोड़ा सा टिप इन हो गया होगा यहाँ पे, तो वही शायद आकाश बोल रहे कि ये थोड़ा सा अगर आप अलग तरीके से थोड़ा उसको मारते शायद एक रन जरूर मिलता, लेकिन डॉट डिलीवरी ये है। और ये विकेट कीपर बहुत बहुत तैनात है, ये बहुत शार्प है अपने स्किल्स में, उनको आपको चकमा देने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, स्पेशली जो इनकी स्टंपिंग है ना बहुत ही सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टंपिंग है। आखिरी गेंद 19 ओवर का और कोई सिग्नल नहीं है। हाँ मैं भी वेट कर रहा था कि सिग्नल आए ना आए, लेकिन कुछ भी नहीं है। पेनल्टी में ओवर हो गया खत्म 19 ओवर के बाद। 110 7 विकेट के नुकसान पे लॉर्ड्स 11 संतोष क्रिकेट एकेडमी। Okay. So the last over in progress, and Kaushik will have the ball in hand, smashes it squarish towards the mid-wicket region. The call is for 2, but they will just get 1 run. And it will be now 1-1-1 for 7. Time to again recollect the memory of late umpire David Shepherd. Always has his legs up and down when the score moves on 1-1-1. So some kind of superstitions, some kind of syncretisms when you go behind those figures and numbers that people flashes, but now this has been flashed towards the point and sweep a cover by Anand Vijayan, but we'll just get a single and give the strike to Akash S. He's not happy. Look at the other end. He's hitting his bat on the pads and looking like a distraughted man, wanting to pull that ball. I'll have to But wait I for the don't umpire run on signal the whether wicket. it's on the thighs of the umpire or it's off the bat. It's off the bat, I believe. Been a quiet over, been a quiet last over. He's mixing his pace beautifully here, Kaushik. All the ones on the board of the first 3 balls here. 4th ball of the 20th over. Waited for the ball to come on to him and presents the full face of the bat. The call is for the second one and they will get it. Little bit of a collision route with the wicket keeper, but he controls his route and path very well and got into safe house of the striking end. A couple of runs here, 5 runs of the 4 balls of Kaushik that has bowled. Outside edge of the stump, he has deliberately curved it away towards the 3rd man boundary for 4. Eventually, they get a boundary. It was a quiet over, but now after a couple of runs and a boundary, this is going to be a huge one. So 9 runs have been scored off this over. This is just not really that he was expecting to But I be don't leave in that this form too of early. mind as of now. And now I feel this is a very, very nice, respectable score for Lords 11. Last ball, wanting to smash it, curving again, I think outside edge, just a single. They will finish on 120 for 7. Oh, is it a run? Is it a couple of runs here? I'll have to check on what's the exact score they have finished on. And because they're picking up and shaping up to pick up 1 run. And there you go, was trying to glide it. But I believe they have just picked up 1 run in pursuit of trying to, that ball getting, that's a run out. That actually is a run out. That finger of the umpire also confirms that. And will they get 1 run and then
Did they complete the first run correctly? The score hasn't, as of now, moved up, and it's still showing 1 ball pending. So yeah, there you go. They have picked up 1 run, but they have also lost 1 wicket. So after 20 overs, Lord's 11 Sandoz Cricket Academy are 120 for 8, which means that Crazy Crews will be needing 121 runs to win this contest in 20 overs. So do join us after 10 minutes of this for the chase. Don't go away. Stay tuned on YouTube on your channels, Professional Cricket Competitions and Music Cricket Series, and also Boundary. enjoy the first innings highlights. Cheers. Boundary. Not out. Not out. Not out. Fine. That's it. Bat. Catch it. Umpire decision out. Why did you block my view? Oh, bat.
Good afternoon, everyone, and welcome back to the chase here. The target is 121 or 120 balls for Crazy Cruise. Rafiq Ahmed has the ball in his hand, and it will be Akash M who will be facing the first ball. He's a spinner. There is a wicket keeper, of course, and then there is a slip to accompany him. Rafiq Ahmed will be at the other end. It's Rahul Lords 11. I love that name. Is his name Rahul Lords 11? Short delivery. First up, oh, this could have been a frightening start for Akash M in the very first ball. Rafiq Ahmed is at the non-strikers in Rahul Lords 11. I love that name. And jersey number 800. Mutia Mulidaran has 800 wickets to his name. If he can emulate even half of that, that will be very, very great for him. Like I said, ball this time. One tick to make an immediate impression on the second ball. This is something happening. That's the name. The team name is Crazy Cruise. So all the crews are crazily making some shots happening here. So wait with bated views of what might just happen here. Third ball of the first over. Just in number 800, Rahul Lords 11 flights outside off stump, wanting to slash that, but the umpire will say, "Look at me! I've extended my wings. I'm flapping, and I'm ready to fly." One run will make the account open for Crazy Cruise. It'll be now 1 for no loss after the two balls. And well, huge appeal. He is sitting down, and the note goes up, and the finger goes on immediately. He has gone upstairs to review the decision of the umpire. Oh, do you need drama? Do you need drama? Come to this cricket ground to watch it. Everything happening with the spacey balls. Nothing is missing there. I think that looks to be little tough here for him. Jersey number 800, Rahul Lords 11, pitching on that stump, wanting to play it against the turn. Sits there with one leg down, appealing, begging, asking. Can I get that wicket, please? Can I get that wicket, please? Up goes the umpire, and also up goes the review for the TV umpire. It is very close. Looks to be very close. He was there probing on the front foot. But you have to look at the line of that ball, where it has come from, where it is pitched. Third I never thought I'll be so busy early in this afternoon. It's just 4 p.m. I really don't know whether he's gone something down his belly, but this is a task he'll be really up to now. That bat goes straight. The bat goes straight, doesn't connect with the bat. Of course, there's a daylight between bat and pad, but that's not the concern. The concern is whether he has probed enough to cut that angle of the ball, not to slide onto his stumps. And mind you, that finger has gone up, so the third umpire has to negate it, has to overturn that in order for the batsman to survive there, or else he's a goner. He just have to go back and sit among his colleagues to watch the remainder of this innings, of the chase innings. Was so much of drama in this first over. Ball bounced and then was almost onto the slips in the very first ball, and the ball just checked back, and then the third one, then the wide, and then this one. The time is ticking, the clock is ticking. What will be the decision? We are all in readiness now. And the finger remains the same. It will go up. Akash M has to go back to the pavilion without disturbing the scorers. That's the first wicket down for Crazy Cruise. It's 1-1 after 3 balls.
Vijay will come out in the middle and will be joining Rafiq Ahmed. Rafiq Ahmed will be saying, hang on, I am just there, the non-striker. I haven't done anything, but I've seen so much happening at the other end. He'll be like imploding in his mind. Thankfully, probably, I haven't faced these few balls because there's so much of drama and action happening right there at this chase. They required 120 more runs to win this contest of 117 balls now, and it's Vijay will be facing Rahul, a Lord's 11. Right, a delivery outside off some. Everyone is getting excited. He doesn't want to run. Non-striker Rafiq Ahmed. He was halfway walked the crease. Oh, do we need some more drama in this over? Hmm. What's happening there again? That walkie-talkie comes out of the umpire trying to communicate something there. It's 1-for-1 for Crazy Cruise. They're actually making everyone go crazy and helter-skelter. But that first ball wasn't where it was supposed to go. It bounced back. Wicketkeeper misses. Even the slip fielder got blindfolded because of the wicketkeeper coming right in front of him. This some shot will go so much of angle and depth onto the crease to play towards fine leg. Does get a little bit of bat on that, but it was not fine enough to go towards the boundary. Score remains a 2-for-1. But like the name, Rahul Lord's 11. I don't know whether it will be the same for every bowler. Very, very short, goes off the back foot, doesn't connect too well. Little bit away from that fielder who was coming in probably from mid on. But whatever it is, they'll cross over for the second time and he'll get a couple of runs to get off the mark. Vijay, I'm running short of my energy in the very first over. What will happen for the rest of the balls? There's so much thing that has happened in this very first over. One more ball remaining in the first over off the back foot, and Risuli plays at the vacant region. The fielder will keep it at bay. First over, a dramatic first over, will come to an end. Crazy Cruise, a 4-for-1 versus Lord's 11 SANDOS Cricket Academy. आशिक एस के पास है गेंद और पहला ओवर क्या गया है। जर्सी नंबर 800 ने क्या गेंदबाजी की है। ओह, ये गेंद देखिए तब पहा के गई है बाहर। विकेट कीपर ने कर दिया फंबल। ये तो बहुत ही ज्यादा स्पिन खा गई थी। स्लिप जरूर है, 2 स्लिप्स लगाइए आप। फिर से ये टर्न देखिए, ये स्पिन देखिए उस गेंद में आशिक एस से। ये अच्छी होगी अगर उन्होंने एक लय में पकड़ लिया, एक अच्छी लेंथ एंड लाइन में रखा है तो ये जरूर खतरनाक हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं ये क्रेजी क्रूज के लिए। फिर से आशिक एस रफीक अहमद के लिए। रफीक अहमद अगेंस्ट टर्न खेलने की कोशिश की थी, बाहरी किनारा लगाए, लेकिन जर्सी नंबर 10 ने उसको फील्ड फिर से कर दिया है। कोई रन नहीं मिलेगा। पहली 3 गेंद जो अभी उन्होंने पहली बार फेस किया है, कितना कुछ देखा है उन्होंने नॉन स्ट्राइकर से। फ्लाइटेड डिलीवरी, फुल टॉस बना के खेला है इसको मिड विकेट क्षेत्र की तरफ और ये जाएगी लॉन्ग ऑन फेंस की तरफ। कपल ऑफ बाउंसेस दन आता हुए बाउंड्री। तो ये पहला बाउंड्री है अभी
ये क्रेजी क्रूज के लिए ये और स्कोर पहुंच जाएगा 8 एक विकेट के नुकसान पे 10 गेंदों के बाद। हाँ, लाइन 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 पकड़ना जरूरी है। अब जैसे आप हाई फुल टॉस लूप अप करके देंगे तो ये तो प्रहार जाएगा ही जाएगा बाउंड्री के पीछे। फ्लाइट की है इस बार। ये हल्का सा उसको लाइट कर दिया था, Keeper, don't roll the ball. बॉल को पुश कर दिया था रफीक अहमद ने। पहुंच गए 5 पे और स्कोर 9 एक विकेट के नुकसान पे। एक और गेंद शेष है। ये दूसरी ओवर में विजय आ गए स्ट्राइक पे। वो आए थे जब पहला झटका मिला था क्रेजी क्रूज को। विजय को बॉलिंग करेंगे। टर्न देखिए एंड ये टर्न के साथ ये हाथ के भी आ गए टर्न फैलाने में और अतिरिक्त रन ऐड हो जाएंगे उसके साथ। 11 पे 1 और वाइट के साथ 11 नहीं 10 पे 1 9 पे थे वो लोग, माफ कीजिएगा। रन रेट 6.1 और अभी तो काफी टाइम बाकी है तो उस पे आप बाद में नजर रख सकते हैं। हाँ, ये गेंद अच्छी थी, ये टर्न भी अच्छी थी, गेंद भी अच्छी थी, रिप होके चली गई है और मिनिमल फुटबॉल के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की थी लेकिन उनका भाग्य अच्छा है कि कुछ लगा नहीं। क्रेजी Same क्रूज bowler. 2 ओवर के बाद 10 एक विकेट के नुकसान पे। சாப்பாடு வந்தா நீங்க போய் சாப்பிட்டுருங்க. Jersey number 800, Rahul Lords 11, has come up to ball again in his second over. This time there will be a couple of runs coming up for sure because though the stumps have been destroyed by the wicket keeper, but still those couple of runs cannot be stopped because this is little kind of a loose now here from Rahul Lords 11. I thought the other cricketers, Ashik, would also be Leg sporting stump those கொஞ்சம் உள்ள. initials, Lords 11, but he doesn't have those, so it's kind of a special numbers. Arjun 45, Joker Surya 7, then you have Rahul Lords 11. These are some unique names which have been throwing up in this championship. Flights the delivery off the back foot. If I thought that there was some kind of an equation been making, he was too much on the back foot playing Rafiq Ahmed now, still on 7 of 7 deliveries, and because he's getting some purchase, he's getting some turn from the bounce. So Rafiq Ahmed really needs to be a little bit more cautious and conscious of how to that play off the back foot doesn't get high enough on that bat. But that ball will go very, very slowly towards the long on fence for a single as he'll get 1 run. As the score will move on to 13 for 1 in 2.3 overs. Vijay will have the strike now onto 2 or 4. That's a ball, and Vijay thought, why not leave that ball? So that has gone into the safe gloves of the wicketkeeper. Jersey number 800 again outside off stump, plays it deliberately from there, but so much of taking to play that pain to play that stroke, but just a single to exchange numbers with his partner Rafiq Ahmed will now be on the strike to face the last ball of the third over from Rahul Lords 11. And doesn't fly it again, cross batted stroke. The ball is going towards that vacant mid-wicket region, and that will be 4 runs to his name. This is a good completion to this over. Over. 8 runs have come up from Rahul Lords 11 second Over. over. After 3 overs, Crazy Crews are 18 for 1.
18 पे एक क्रेजी क्रूज और बॉलिंग फिर से करने आ रहे हैं आशिक अल्ताफ एस। उन्होंने 6 रन दिए अपने पहले ओवर पे। और राफिक को देखिए नॉन स्ट्राइकर में 12 नाबाद है 9 गेंदों में। उन्होंने काफी कुछ देखा था पहला ओवर के बाद, पर पहला ओवर में बहुत ही ड्रामेटिक था वो ओवर। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला क्योंकि एक विकेट चली गई थी, लेकिन ये जो टर्न अभी आशिक को मिल रही है लेग स्पिनर के हिसाब से, स्लिप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ तो सुना था, मैं अपील करूं, आप लोग तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे हो। ना विकेट कीपर ने अपील की, ना बॉलर ने अपील की, तो ये कुछ अलग ही रणनीति है चल रही थी। हाँ हाँ हाँ, ये वाइड हो सकता था, ये वाइड होता था, लेकिन आपने उससे छेड़खानी की, बैट पे लगी, कवर्स पे चली गई, तो ये डॉट ये एक्चुअली वाइड होते होते बच गई। 103 और रन की जरूरत है यहाँ पे। आशिक फिर से विजय को फ्लाइट किया, ये गेंद अच्छी है, रिपर ऑफ अ डिलीवरी। शेन वॉर्न को बुलाइए, शेन वॉर्न को दिखाइए, ये गेंद तब पखा के गई है बिल्कुल बाहर। हाँ, माइक गेटिंग का वो जो विकेट था, शेन वॉर्न ने जो लिया था, स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, सबको बेवकूफ बना के पीछे चली गई है ये गेंद। द शेन वॉर्न का बॉल ऑफ द सेंचुरी तो इसी को कहते थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटसाइड लेग स्टंप, वो पिच होके बिल्कुल ऑफ स्टंप को किस करके गई थी, और माइक गेटिंग थे उनके विक्टिम। तो 19 एक विकेट के नुकसान पे, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, बॉल को बहुत ज्यादा फ्लाइट कर रहे हैं यहाँ पे आशिक एस। एक विकेट रहते रहते बच गए, यहाँ पे 7 रन दे चुके हैं। फिर से बॉलिंग करेंगे रफीक अहमद को, और बैकफुट पे जाके उसको कट करने की कोशिश की थी, लेकिन टर्न काफी मिला है उनको यहाँ पे, और उसके वजह से वो उसके बॉल के टॉप पे आके मार नहीं पा रहे। लेकिन एक गेंद अभी भी बाकी होगा 4 ओवर कंप्लीट करने में, लेकिन विजय नॉन स्ट्राइक पे 4 नॉट आउट है 10 गेंद। ये देखिए, ये गेंद आप नहीं कर सकते, इतना ज्यादा फ्लैट और इतना ज्यादा वाइड, और विकेट के बाहर जाके ये गिरी है। लेकिन 1 रन दिया है उन्होंने इस ओवर में। रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ 6.31। आखिरी गेंद 4वां ओवर का फ्लाइट किया है, उसको ड्राइव किया है, इनसाइड आउट ड्राइव किया है कवर्स की दिशा में। कोई रन नहीं मिलेगा 4 ओवर के बाद, सिर्फ 1 रन, एक बैट से एक वाइड से, तो 2 रन एक्चुअली इस ओवर में। 4 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 20 एक विकेट के नुकसान पे। Twenty for 1 in 4 overs. Crazy Cruise flights that ball, defended off the back foot back to that bowler himself. But what spin, what turn, and what bounce why is Ashik as being generating from the surface, and he really needs to punctuate on that. But the few later deliveries were not the ones which he was supposed to do, because those they spun out of the pitch. Now the batter Vijay was thinking, hey, why are you not flipping your arms now? Then he says, yeah, okay, thank you so much for making it a bit late than required. That single will come up definitely in the form of a wide 21 for 1 off the back foot going. It's in the air, has then been connected too well. There is a fielder. It will go just over him. At one point, I'm sure Vijay's heart must have been in his mouth as he saw that ball going in the air, not being in full control of that back foot punch. But that will allow him to exchange numbers and move on to 5 of 12. The score on to 22 for 1. And Rafiq Ahmed is there on strike. Flatted delivery, moves and to curve that ball across cover. But there will be no run. It's a dot delivery. But I was talking about Ashik. Ashik has last over. What kind of spin he was getting. And that Shane Warne would have been interested. That's a wide ball. And then one ball, the third one, which actually pitched on middle
on leg, and midlander turned away from him. That was an absolute jutor of a delivery. Short delivery again. Rolks on the back foot very, very easily. He couldn't get a hand on it. So the velocity of the ball was stopped right in there. That was well. That was, but he cannot bowl so short. Rahul Lord's 11. He's got a Lord's name in the middle of his name, so really need to be up in his billing there. He has also a wicket to his name, 1 for 16. Flights the ball way outside off stump again. The arms of the umpire will come out, stressing left and right. This is really not good as a spinner. It's actually just adding up to your own demise. I would believe here. It's like a sordid, never-ending sight for you. Taking on the full this I think there is a fly right on the lenses of the camera, and because of that fly falling on the lens, it's looking like a huge insect there. But it has gone off. It was just checking. I cannot be here. This is not my angle. So thank you so much. Last ball of the 5th over. Again, off the back foot. There's so much empty space there. That fielder doesn't pick up the ball completely, but the repair job will be done by the fielder behind him. 27 for 1 after 5 overs for Crazy Cruz. मीनू कोशी के हाथ में है गेंद। 27 ओवर 27 रन, एक विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के बाद ये विकेट कीपर उसको ठीक से रोक नहीं पाए, बिल्कुल पीछे चली गई है। स्लिप उनको मदद कर देंगे। ये अभी देखिए सूर्य की किरण बिल्कुल अपने प्रकाश के साथ पिच पे आ गई है। ये थोड़ा सा संदिग्ध मामला यहाँ पे उनके द्वारा, नेचर कॉल है ये, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। 29 रन एक विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के बाद। गुड बॉल, बिल्कुल वहां जाके टप्पा खाने के बाद उन्होंने बिल्कुल फ्रंट फुट डिफेंस किया हल्के हाथों से। विजय 6 नॉट आउट 14 गेंदों के बाद। रफीक अहमद 14 नॉट आउट 14 5 ओवर एक गेंद के बाद 29 एक विकेट के नुकसान पे। कितना शॉट देखिए, आउटसाइड एज ऊपर लग के चली गई थी। वो गेंदबाज थोड़ा सा विमुख हो गए थे, उनको पकड़ने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन इतना भाप नहीं पाए, उनके ऊपर से चली गई मिड ऑफ के फील्डर के पास, लेकिन वो भी थोड़ा सा शायद छूट गए थे वहां पे, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा, ये अच्छी बात है।
एक वाइड और फिर डॉट डॉट बीनू कौशी फिर से अभी विजय को इस बार लेग साइड नहीं, ये लाइन पे कंट्रोल रखिए आप। बिल्कुल वाइड चली गई थी और इस बार विकेट कीपर ने बेहतरीन, उससे पहले से बेटर काम किया है, उसको बिल्कुल अपने सेफ दस्तानों में रखा और स्कोर में हो गया है इजाफा 30 रन एक विकेट के नुकसान पे 32 गेंदों में। और यहाँ देखिए इक्वेशन 91 चाहिए 88 बॉल्स में। काफी ज्यादा शॉर्ट बैकफुट पे बहुत जल्दी आ गए थे विजय स्ट्रोक को खेलने के लिए, लेकिन कोई रन फिर से नहीं मिलेगा क्योंकि ये बॉल तेजी से चली गई है। ये आपकी ये मिड ऑन की दिशा में, स्क्वेरिश ऑफ मिड ऑन में कहूंगा। चौथा गेंद 6th ओवर का, सॉरी बीनू कौशिक विजय को इस बार थोड़ा सा हल्के से पुश किया उन्होंने पीछे आके और एक रन फिर जरूर मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप देखिए 30 बन गया 31 गेंदों में, कंट्रीब्यूशन से 7 और 14 इन दोनों के बीच में। बाकी सारे एक्चुअली बहुत सारा वाइड भी देखने को मिला है हमें इस मैच में। बीनू कौशिक का 5वां गेंद होगा, 4 रन दे चुके हैं और ये आप देख रहे हैं ITS 6 सितंबर 2024 और ये आज दिन का दूसरा मैच है। वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप काफी बाहर था, ये तो वाइड कोई भी दे देगा किसी भी ग्राउंड में, किसी भी मैच में, किसी भी फॉर्मेट में। बहुत ज्यादा बाहर था क्रीज से, सॉरी पिच से। तो ये कभी कभी ना ऐसे नॉट ओनली अंपायर बट ऑल्सो द विकेट कीपर को भी काफी काम पे लगाते हैं ऐसे, जैसे ये बहुत ज्यादा बाहर हो गया था। 5वां गेंद 6th ओवर का, और भी बैकफुट पे जाके हल्का सा पंच कवर पे, कोई भी रन नहीं। One more. हाँ काफी लास्ट मोमेंट में जाके उसको बैट को जैम किया। 6 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 32 एक विकेट के नुकसान पे। After 6 overs, Crazy Crews are 32 for 1. They need 89 more runs of 84 as Pranav Raj now has been given the ball to break this small little partnership which is brewing between Vijay and Rafiq Ahmed. With the batters on 7 and 14 runs respectively onto their scores outside off stump goes on the full to play that stroke. And they've just finished the power play which is within 6 overs. A very quick single being stolen till the ball has been retrieved and thrown back to the wicketkeeper. But they really need to know that the target is not very huge. So leaking of runs might just be at their own peril now. Because when they bring on these partnerships and then after 10 overs or so, they might just go and use the long handle across any direction. Then outside off stump, very
Very cleverly played, deliberately pushed and squeezed that ball outside off stump towards that man at deep gully, but they will not get any run. Just one run of those three balls that he has faced now at 33 for 1 in 6.3 overs. But they should have probably bought in Ashik because he's got so much of turn here on this pitch, and that the surface is very much conducive to the turns that they have get. But they've gone on to this medium paces, probably repositing the fate on the paces of getting some amount of runs. But that ball has been hit disdainfully towards the mid-wicket fence. There are two fielders converging. One of them will definitely cut it off and give it back to the bowler. Pranav Raj. Then I don't know whether he can extract on bounce because he's not a very tall cricketer. He has a very short height, but he can extract some pace and try and fool the batsman outside the off stump. And as of now, he's not being able to do short. He's being way too short for the liking, and that's why both the batsmen has been very easily going on the back foot and playing him towards the mid wicket region. Again, on the back foot, is playing towards the mid wicket. There is a vacant region there, but the fielder will quickly come off and clear that ball, preventing a definite boundary because it had definitely the legs and the velocity to cross the ropes. But no run. Just two balls now remaining in the seventh over. Pranav Raj, three not out, three runs that they've given off the four balls. Score on to 35 for 1 for Crazy Cruz. Yeah, there you can see wanting to poke the ball outside off stump. Didn't get any connection on the meat of the bat. With one more. more ball now remaining in the seventh over. La, 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 la. Required run rate almost playing like a hide and seek game with the current run rate at 6.53. The current one going at 5.12. So almost like a neck and neck kind of a competition. You can see there 86 required of 79. Last ball from Raj's first over. This is nice. This is nice. Glided very well. The slip fielder cannot do anything as the ball has the legs to go towards the third man boundary for 4. This is a nice end to this over. 7 overs done and dusted. Crazy Crews are rollicking around at 39 for 1. You can see deliberately just opened the face of the bat. No chance at all for that fielder despite the dive. And it happily and gleefully, slowly moving all along the surface towards the third man boundary. 39 for 1 after 7 overs for Crazy Crews. सात ओवर के बाद 39 है, एक विकेट के नुकसान पे बहुत बढ़िया अपील और अंपायर ने बोला हाँ जी हाँ, ये विकेट है आपके नाम, विजय को जाना पड़ेगा पेविलियन के वापस। और क्रेजी क्रूज ने अपना दूसरा विकेट भी गंवाया है यहाँ पे 39 2 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद बीनू कोशी का दूसरे ओवर का पहला गेंद और उन्होंने चटकाया है और ये पार्टनरशिप को तोड़ दिया है रफीक अहमद और विजय के बीच में। 39 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए देखिए अच्छी गेंद, बिल्कुल मैंडिंग इज बैक, मिडिल स्टंप पे वो क्रीज। हाँ, ये तो प्लाम था, ये जी तो प्लाम था। नॉट करते हुए बोला जी हाँ जी हाँ, 1 सेकंड में उंगली उठाता हूँ, ये रहा आपका ऑफिशियल सिग्नल। और उनको चलता किया। पहला विकेट वेनु कौशिक के नाम। 39 2 विकेट के नुकसान पे क्रेजी क्रूज।
क्रेजी क्रूज 39 2 विकेट के नुकसान पे बीनू कौशी ने दे दिया है झटका। उनके नाम पे हो गया ये पहला विकेट। प्लम इन फ्रंट था ये। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था। ये तो बस एक ऑफिशियली बस अपील करने की देरी थी। और जब तक वो अपील कंप्लीट करते अंपायर भी जुड़ चुके थे बोलने के लिए। और विजय को भी पता था वो तो, क्योंकि वो ट्रैप हो चुके हैं, इसलिए वो अपने साथी को भी नहीं देख रहे थे, पूरा पेविलियन के और चलते दिए थे। जफर आ गए नया बैट्समैन और वो फेस कर रहे हैं विनू कौशी को वाइड डाउन द लेग साइड। हाँ यही है कि अब आप विकेट्स लेते हो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, डाउन द लेग साइड चले जाते हो। ये प्रेशर रिलीज नहीं करना है, प्रेशर बिल्कुल इंटेक्ट बना के रखे वहां पे। या स्लिप रेखे आए एक फ्रंट फुट, एक फॉरवर्ड या बैकवर्ड शॉट लेके ना उनको जितना हो सके प्रेशर दीजिए, क्योंकि आपके पास और 81 रन चाहिए उनको 77 बॉल्स में। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 2 विकेट्स ही अभी तक गंवाए हैं। रफीक अहमद दूसरी छोर पे 19 नॉट आउट, नाबाद 20 गेंदों में। तो अगर एक अच्छी पार्टनरशिप हुई ना तो ये फिर उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ये लॉर्ड्स 11 को, क्योंकि अभी यहाँ तक करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट के बीच में ये थोड़ा छोड़ पुलिस का खेल चल रहा है। अभी के लिए करंट रन रेट थोड़ा आगे है, सॉरी रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से आगे है। तो ये चाहेंगे क्रेजी क्रूज की इसको थोड़ा सा पीछे रखे एटलीस्ट, क्योंकि बाद में उनको कोई कसरत ना ज्यादा करना पड़े। लेकिन लॉर्ड्स 11 संतोष क्रिकेट एकेडमी, उनको विकेट चाहिए, रन्स को ड्राई अप करना है। और ये पहले रन रेट यही होनी चाहिए। वीनू कौशिक तो अभी दौड़ के आ रहे रफीक अहमद को बहुत आराम से उन्होंने खेला। पिछले ओवर में भी वही रफीक अहमद ने ये शॉट डिलीवरेटली खेला था और 4 रन का इजाफा हुआ था उनके अकाउंट में, जिससे उनका और भी मनोबल आई एम श्योर थोड़ा सा बन के स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 20 रन के नाबाद स्कोर पे 21 गेंद में अभी खेल रहे हो। चौथा गेंद 8वें ओवर का, फिर से ये गेंद थोड़ा सा शॉर्ट रखा, बैकफुट पे जाके थोड़ा सा पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी वो, क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा ऊपर आई नहीं रही। 28 से उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, कोई रन नहीं। तो यही होना चाहिए कि जितना हो सके उनके रूम के लिए क्रैम करे, उनको फ्री विल ना दे रन्स मारने के लिए, क्योंकि पिछला से पिछले ओवरव्यू था काफी रन दे दिए, काफी रन्स दे दिए। अभी एक रन आ जाएगा अतिरिक्त वाइड के रूप में। और ये कभी कभी आते रहते, इनको तो आप स्टॉप नहीं कर सकते। इस लेवल पे कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नहीं तो आपको तो काफी ज्यादा मार पड़ती। और कोई अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का फैन है, डुलीप ट्रॉफी में भी काफी अच्छे इंडिया ए और इंडिया डी के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है वहां पे अनंतपुर स्टेडियम में, साउथ इंडिया में। आगे गेंद, अच्छी गेंद, उनकी लाई देखिए, उनकी पकड़ देखिए वहां पे, पूरा आगे जाके उसको उनको खिलाया। ड्राइव भी फ्रंट फुट पे करना पड़ा। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ उन्होंने उसको गेंद को डाला, उन्होंने खेला, रिस्पेक्टफुली खेला, कोई रन नहीं उसमें। लेकिन ये ओवर पे एक विकेट है, 2 वाइड्स हैं, 2 सिंगल्स हैं, 2 डॉट्स हैं। आखिरी गेंद दौड़ के बॉलिंग करेंगे, जफर को उठा के मारा है जफर ने, और वो विकेट रीजन पे जाएंगे। मिड विकेट की दिशा में 1 रन जरूर मिलेगा और ओवर भी हो जाएंगे 844 खत्म। 8 ओवर के बाद क्रेजी क्रूज 44 2 विकेट के नुकसान पे।
A very interesting battle going on here at the Vellore Cricket Ground in Vellore of this competition, of the second match chase here of this IT 6 version 6, I believe, September 2024. This match between Crazy Cruise and Lords 11 SANDOS Cricket Academy. The target is 100 and 21 of 120 deliveries, and they have been able to keep it at bay as of now for Crazy Cruise. As Pranav Raj again very short. Last ball also it was very short, but this time he has failed to read the line of the ball, Zafar. And I am sure he was thinking, how did it miss the stumps? Is always the question that the bowlers ask, especially a fast bowler. But few bowlers, when there was a spinner, that ball checked in so much and really didn't know how on earth, despite bus spin, that ball missed the leg stump. But 2 wickets at bay, 77 more required, or 70 now. 70, it's getting very close. This time he has found the gap. Despite the dive, little bit of a misfield, and the ball very happily goes very quickly on towards at the deep point boundary for 4 runs. And they will take up this with open arms. Now they did 73 of 16 and very wide delivery from Pranav Raj. He's not learning at all, because in his last over also, he was very short. And this time again, way outside off stump. This is really an invitation, like a hit me ball. And it has been dealt with what it was required to be done. 4 runs, and the score has now moved on to 48 for 2 in 8.3 overs. சார் பால் பை பால் இவ்வளோ டைம் எடுத்தாங்க சார், இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. 90 மினிட்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் போடலைன்னா ஃபீல்டர்ஸை உள்ளே வர வச்சிருவேன். பால் பை பால் ஃபீல்டர்ஸை மாற்றிட்டே இருக்கீங்க. Raj running in again. One hand has actually come up. He had absolutely no answer of where that ball has gone. After he completed a stroke, he was trying to look here and there, but the ball has actually gone towards more square-like region. No run. He's leaving little dangerously, I believe. After that 4, he gave some room, but then again now a dot delivery. But when that ball comes up, that's when that problem must be creating for the batsman. Pranav Raj again little bit slower this time, but drive has been very nicely done, with showing the full face of the bat was that extra cover region for no run. One more ball remaining in Pranav Raj over. These 2 balls have been really spot on. In the last over, it's actually all 5 balls have been short. At that time, Pranav was the batsman who dealt with him most of the balls. But now this is good. Last over of the 9th over. This is wayward. No ball has been called, and the direction with the bat will go towards the final leg also for 4 runs. 5 runs, 4 runs off the bat, and a no ball. This is the slip of the ball from the hand. But no complaints for Crazy Cruise, because they will grab these runs with open arms. And also the 50 has come up from Crazy Cruise at 53 for 2. One more ball remain. This is wayward. No chance absolutely for the wicketkeeper to do something on that ball, as it went even behind the wicketkeeper towards the final leg fence for 4 runs. Last ball of the 9th over. Hopefully it will be the last. Smashed it, taken on the full, but a little bit of a misfield. This over from Pranav Raj is really not enticing. He'll not be happy with what's going on, and for most of the part, he has himself to be blamed. 9 overs done and dusted. 14 extras in this run chase now, and the total is 54 for 2 for Crazy Cruise. 954. Sabina Koshi.
ஆமா. बिनू कोशी कंटिन्यू करेंगे 10वां ओवर, लेकिन ये वाइड गेंद पहले ही बॉल पे। तो क्या शेष और ये कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी सी एक पार्टनरशिप बनती हुई यहाँ पे रफीक अहमद और जफर के बीच में। अभी वो करेंगे बॉल जफर को, थोड़ा सा उठा के आई थी लेग साइड पे ये गेंद। ये अपने हिप से रिस्कफुली खेलेंगे इस गेंद को और 1 रन चुरा लेंगे यहाँ पे, स्कोर में इजाफा होते हुए 56 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए यहाँ पे 65 चाहिए 65 गेंदों में, एंड बहुत कुछ होना अभी बाकी है। ये एज ऑफ द सीट कंपटीशन हो सकता है, नेल बाइटिंग फिनिश हो सकती है। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स एंड यूनिवर्सल क्रिकेट सीरीज में ये सारे मैचेस आएंगे लाइव। और मैं आपका होस्ट कमेंटेटर मयूर बरुआ आपको आंखों देखा हाल अपने कमेंट्री के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा, ये प्रोडक्शन, ये जो आपको इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स ने जो कोशिश की है, ये सारा। तो आई होप ये सब आपके लिए एक मनोरंजन, एक प्लेटफॉर्म बना के रखा होगा। थोड़ी सी टेक्निकल खराबी हम यहाँ पे सर वो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कुछ दिखाई एक्चुअली इतना नहीं दे रहा है, इसके लिए हम थोड़ा माफी चाहेंगे। हाँ, खेल दिया ओपन बैट से, एक फील्डर है मौजूद वहां पे, आखिरी मोमेंट पे उन्होंने बैट का फेस खोल दिया था, लेकिन थोड़ा सा और स्क्वायर होते तो बिल्कुल पीछे चली जाती 4 रन के लिए, लेकिन वो डीप गली पोजीशन उसको फिल कर देंगे तो कोई रन नहीं मिलेगा। अभी ये शांत वाला ओवर है, 3 रन बैट से आई है, एक अतिरिक्त वाइड। 5वां गेंद ऊपर खेल के मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, ये गेंद कहाँ जाएगी? ये प्रणव क्या ये 4 है, क्या ये 6 है? अभी ऑफिशियल सिग्नल आना बाकी No, है। one more. 6 है। ओ खूबसूरत चौका, No, one बिल्कुल more Dana. खोल के Good. मारा है आउट वाइड ऑफ ऑफ स्टंप, और लॉन्ग ऑन की दिशा में, ये देखिए लॉन्ग ऑन की दिशा में इसको डिपॉजिट किया है रफीक अहमद ने। इनका कनेक्शन देखने लायक है, लेकिन ये अगर ज्यादा हाथ खोल लिए ना तो ये तो आपके लॉर्ड्स 11 संडोज क्रिकेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्रेजी क्रूज के विरुद्ध, Over. क्योंकि ये 6. क्रेजी है, ये टीम क्रेजीली कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको संभाल के खेलना पड़ेगा। 10 ओवर का हो गया है, ओवर्स खत्म, और क्रेजी क्रूज 65 2 विकेट के नुकसान पे।
Right ball. ബൗളർ यार അൽത്താഫാ Altaf. Leg. Inward. That's your leg. Six 7 for 2 in 10.1 overs. Ashik has the ball in his hand. He spins the ball very, very well. So his inclusion now in this team or in this over introduction, I would say, it will be very, very crucial factor. And if he can pick up some, and then Crazy Cruz might be smelling the cat among the pigeons. Flights that delivery. Ah, good ball, good turn. Oh, he is from boxed with the kind of turn and purchase that jersey number 30, Ashik as is getting here. So the best part is try and play to the pitch of the delivery. Again, flighted ball. This is in the air. This is there is a fielder there. He cannot. Little bit short this time, but so much of time to play that stroke. And it's better that if he can do what he did in some previous overs back, where he flattened that ball. This is so much turn that is get your line and length correct, gentlemen. Ashik, and I'm sure something is waiting for you there, because this time it's been way too short and easy for the batsman to go after that ball for Zafar. Last ball of the 11th over. This was better, much better. Little bit of confusion between Rafiq Ahmed and Zafar on that ball, but they will cross numbers. 11 overs done, and Crazy Crews are now 68 for 2. എനിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Fast. Anand. Anand. Over. What are you coming? ஆனந்த் விஜயன் போட்டிருக்கியாதா கோபி? ஆனந்த் விஜயன். Anand. விஜயன் போட்டிருக்கு அது. Anand Vijayan. आनंद जैन के पास है गेंद, उनको थमाया गया है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आइए कुछ करके दिखाइए। ऑफ स्पिन, पहली गेंद पे हो सकता था विकेट। दिमुख से अंपायर बोले रुकिए, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या गेंद है, चेक बनेगा। शुरुआती गेंद है आनंद विजयन से, बिल्कुल बैकफुट पे भेजा जाफर को। जाफर ऑफ डिलीवरी हो सकता है। वॉकी टॉकी निकाल के ऊपर पूछ रहे हैं कि क्या ये मदद मिल सकती है आनंद विजयन को, क्या ये ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, क्या कुछ। फिर से विमुख में सब लोग। जर्सी नंबर 7 फ्लाई डिलीवरी, पहले फ्रंट फिर बैक में जाके ये शायद बोल्ड हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन रिप्लेस देखना पड़ेगा कि ग्लव्स तो नहीं लगी है। ये विकेट हो सकता। हाँ जी, आपको चलता बांधना पड़ेगा पेविलियन को। और मुझे लगता है कि ये गेंद ने बेल्स को डिसलॉज कर दिया है। आनंद विजयन को मिल सकता है अपना पहला विकेट यहाँ पे पहले ही गेंद पे। क्या इंट्रोडक्शन है कैप्टन साहब का। उनको गेंद थमाया और उन्होंने रेस्पॉन्ड किया इमीडिएटली। ये फ्रंट एंड बैक जाके बेल्स गिर गई थी। ये ग्लव्स लगी नहीं है वहां पे, यहाँ पे बॉल ही लगी है। ऑफिशियल सिग्नल अभी आ जाएगा। अंपायर शेप अप कर रहे हैं एंड हाथ बॉल अपने
सर्ग नॉट कटे, ये रहा फिंगर ऑफिशियल कंफर्मेशन की गेंद स्टंप्स पे लगी है और ये पार्टनरशिप टूट गई है। जाफर वापस जाएंगे 14 रन बना के 19 गेंदों में और क्रेजी क्रूज अभी है 68, 3 विकेट के नुकसान पे। Thank you. Why are you guys coming here? Obe, Sham, sir. Sham. Okay. Inward. Touch a leg. Bowler coming right arm over. 5 more to come. सो आनंद विजय ने दे दिया है ब्रेक थ्रू पहले ही गेम पे। Gone. अच्छी टर्न और बिल्कुल फूल कर दिया था उनको और 3 विकेट अभी चले गए हैं। क्रेजी क्रूज का रफीक अहमद फिर भी है नॉन स्ट्राइकर पे, 29 रन बनाए, अभी स्ट्राइक पे आ जाएंगे 29 26 गेंदों में। पहला ओवर में पहला विकेट झटका मिलने से कितना मोटिवेशन, कितना मनोबल आता है आपको। जर्सी नंबर 7 फिर से ये डाउन द लेग से, नहीं ये गेंदबाजी अच्छी नहीं होगी क्योंकि ये बैट पे लगी है, लेकिन अब डाउन द लेग से नहीं जा सकते, नहीं लगी नहीं है, ये वाइड का इशारा। तो ये अभी 1 रन अतिरिक्त आ जाएगी, 70 हो चुका है क्रेजी क्रूज का 3 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से फ्लाइटेड बॉल, इस बार लेग साइड पे इनसाइड एज होके लगा है, बहुत लॉन्ग हैंडल जिसको बोलते हैं उनको यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये 4 रन फाइन लेग की दिशा में, 4 रन कहां से आए हैं ये बहुत मिक्स्ड इमोशंस वाला ओवर है। पहली गेंद पे उनको मिल गया था विकेट, फिर 1 रन, फिर वाइड, फिर अभी गई है 4। नहीं जी नहीं, ये तो आपकी खुद की गलती है, बहुत ज्यादा टॉस अप बॉल था लेग साइड पे और लंबे भी काफी है रफीका में, तो लॉन्ग हैंडल यूज उन्होंने काफी अच्छे से किया है। इनसाइड एज लग की बॉल आराम से धीमी गति से और रोप्स के ऊपर 4 रन 33 पे पहुंच गए। निजी स्कोर में नाबाद है 27 गेंदों में। फिर शॉट फिर बैकफुट पे आके आराम से खेला है। नहीं ये गतिविधि अगर उन्होंने पकड़ ली ना क्रेजी क्रूज ने, तो क्रेजीली आपको वो हरा सकते हैं। लॉर्ड्स 11 तो आप थोड़ा सा सॉक्स पुल अप कर लीजिए। लॉर्ड्स 11 संडोस क्रिकेट एकेडमी जी, ये आनंद विजय ने झटका जरूर दिया, लेकिन सिर्फ 3 विकेट खोया अभी। लॉस्ट ऑफ डिलीवरी, इसको खोद के मारने की कोशिश श्याम के द्वारा, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, डॉट डिलीवरी होगा। एक और गेंद शेष इस 12वीं ओवर में। 75 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद आनंद जैन का पहला ओवर में। श्याम बैकफुट पे जाके थोड़ा सा मुश में हो सकते थे, लेकिन बच गए जी। अगर बैट में ना लगता ना, ह्यूज ये तो पूरा खड़े होके अपील करते, उसका हाउस डेड बोलते, लेकिन 1 रन मिलेगा 12 ओवर के बाद। 17 एक्स्ट्रा आए इस चेज में। टोटल है 76 विकेट के नुकसान में लॉर्ड्स 11 संडोस क्रिकेट एकेडमी का। लास्ट ओवर So leg spinner Ashik S is in action. The last over of his play coming to ball. The ball stuns away. Only the wicketkeeper appeals. Just stood up and wanted to glide the ball onto his Nikavas. Let's see, 14 dot balls, 11 runs he has given. No maidens as yet. But he can do justice to that bowling if he can pick up a wicket to his name. Very short on to him, climbs onto that ball and hits that ball towards that vacant region at mid-off. Little bit of a fumble, but it will be just one. Rafiq Ahmed is not aware of what's happening behind him.
Shyam was looking onto it, but Rafiq Ahmed was busy doing something inside his crease. But even if there was something, he wouldn't have come because he has faced 28 for 34, wanting to play that stroke from outside off stump, but was probably not in a good position to play that stroke. Will miss that ball completely onto the safe gloves of the wicketkeeper. He also fumbles a bit, but no damage done. Ashik again. So much of turn there, waiting for that ball to come on to him, then spinning away and then curves it away towards a long off direction for a single. The score will move on to 78 for 3 for Crazy Cruise. I love the name Crazy Cruise. There's this team which has played the first when Grindos Cricket Club, and now there's Lords wanting to smash it from where it was deposited, and that flight and delivery. But all at least just one added to the total. Shyam gets it. He moves on to 4 of 6. And it's total on to 79 for 3. Just one more ball remaining in the 13th over, and Shyam's spell will finish after this. Try and pick up a wicket. It's been. Oh, it could have been a good catch. It could have been a very, very good catch. Had he held on to that catch, and Ashik would have got his first wicket. But nonetheless, it's no damage done. Just a single from that. 80, 13 overs. 80 for 3 80. for Crazy Cruise. He would have got it. 41 now, 42 balls. He did extend his arms, but he couldn't control, and probably the jump of that ball was not too much. Otherwise, he would have probably held on to that perfectly. 13 overs done. It's 80 for 3 for Crazy Cruise. Offspin in progress, very, very short, rocks onto that, back foot towards the mid-wicket region for the camera angle will not help the cause for a huge maximum, half a dozen for the blade of Rafiq Ahmed. He moves on to 42 of 32. This is really not good. Short stuff. An off-spinner, bowling short stuff, one hand leg down. And he deposits it disdainfully. Really, really not good bowling from a spinner. You're asked to toss the ball up, but what you've done, you've just given a half tracker. And again on to him. Very, very short here. Score on to 86 for 3. They now need less than 40 runs. Need 35 of 41 to win this contest. Going down. To sweep the ball, he needed an appeal as the ball will hit him below underneath the ties. But I feel the ball is going drifting down the legs, and it's why the umpire was not interested. 1 run nonetheless. It will, that's a leg vibing signal. So no run will be added for Rafiq Ahmed's score, but it will be onto the total as it moves on to 87 for 3 in 13.2 overs. Third ball of the 14th over off the back foot, but I feel that might be a wide as the wicketkeeper couldn't keep the ball at bay. It will go behind him, and yes, wide being signaled by the umpire there. So a wide and a 1 run. So the extras keeps on increasing here. So what should have been a good over from Anand started off with a wicket, but now there you go, straight down the ground. Is there a fielder? There is no one. Was that vacant region? There is someone coming in from long on. So just a single is now trying to clear the legs as much as possible and hit the ball towards the vacant region. As much as runs as possible now. Vision onto Shyam. Not out. Very much off the back foot. Everyone looking at the umpire, but almost no appeal from Anand Vijayan. He knows there's nothing in there, so don't want to waste his energy on an invalid appeal. Oh, he's gone upstairs. I thought there was just nothing from Anand Vijayan, but he says, hang on, I could hear what you have said. I really don't know whether it's because I can't find from where I'm doing my online commentary, but he has gone definitely upstairs, and this might be very, very close here.
And this is the angle. This is a flight delivery. Probably the faintest of the nick. I'm sure I haven't heard anything. I really don't know because I'm just doing my online commentary. This will not allow me to hear anything. Probably there's some zoom up from the technical team might help. Yeah, that might just help. But I feel there might be a different angle. Also, they might be requiring. Even you can see from the deflection of the ball. Sometimes it might not allow you so much, but probably a different angle might just help. He was so much deep in the crease while he was trying to play off the back foot to give that ball a direction. Shyam, whether he'll survive or whether he has to take that walk back to the pavilion, we'll get to know in some time from now. But it's going to be a very, very close contest until unless some wickets fall down very heavily, or this game is very, very evenly poised, mind you. So don't blink an eye. Each and every ball that has been pitching here is providing an opportunity for them to display some guts and determination to play till the last ball. This is the second match that you're witnessing of this crazy cruise versus Kings 11, Lords Kings 11, Sandoz Cricket Academy. Crazy Cruise, having won the toss today, elected to bowl first. They managed to keep the runs at bay at 120 from the blade of Lords Kings 11, Sandoz Cricket Academy, and now while chasing their 4 wickets down, and now in confrontation of whether the 5th wicket will be down, whether they survive, whether they'll go back to the pavilion. We'll get to know in some time, very, very soon. But it's a job now of the third umpire to try and see what best he can do, because those edges and sometimes are not really not easy. Sometimes it takes a hell out of you, mind you, to try and see of what is there. And the wicket, that's not out. That's not out. It's not a wicket. It's not a wicket. It's a dot one. He didn't go upstairs, but he will not get the nod from the TV umpire. So all at peace now, with 2 more balls remaining in the 14th over. Shyam is 4 not out of 7. Rafiq Ahmed just 2 strokes away from what will be an incredible half century for him if he can punctuate this innings. He's played little slowly, but he has managed to keep his run flooring intact here. 5th ball of the 14th over. Very, very short again, wanting to climb onto that ball, but it will be wide as both the arms of the umpire will come left and right to signal an extra onto crazy cruise, and it will be now 91 for 3. Right ball. This is defense. This is a very different kind of defense that I've seen of Shyam. almost squaring him up, but he goes right behind that ball and plays a very nice defensive stroke. Last ball of the 14th over. Climbs onto 8, little bit in the air towards fine leg. There is no one. There is absolutely no one. That will be 4 for Shyam, and to complete the over, it will be 95 for 3 after 14th over for Crazy Cruise. ஒய்டு கொடுத்தீங்களா?
பவுலர் யார் சனலா? Bowler coming. Right arm over. Batter change in bowling. Bowler coming right arm over. सनाल के पास है गेंद और वो बॉलिंग करेंगे 15वां ओवर 95 3 विकेट के नुकसान पे। काफी वाइड ये अतिरिक्त आ जाएगा। पहले गेंद सनाल का। हाँ जी, ये नहीं, थोड़ा सा सीधा रखिए आप। जर्सी नंबर 3 स्पोर्ट करते हुए आपको 3 विकेट तो चटकाने ही है। हाँ, फ्लाइट की है, दूर गई है, कमाल की दूरी गई है। ये मिल जाएगा छक्का और स्कोर ट्रिपल फिगर पे पहुंच जाएगी। 102 3 विकेट के नुकसान पे। जब वो गेंद ऊपर जा रही थी, सनल ने बोला हाँ जी ये विकेट होना चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ जी हाँ, मैं विकेट तो ले लूंगा, कैच तो पकड़ लूंगा, लेकिन बाउंड्री के अंदर। देखिए ये कैसे उठाया। हाँ, रफीका में तो ये मजेदार शॉट उठाते हैं और ये काफी अच्छा शॉट, काफी बेहतरीन शॉट, क्या कंट्रोल एंड उसको पूरा अच्छी तरह से उठाया और सिर्फ 1 रन दूरी अपने निजी अर्धशतक के लिए। हाँ, इस बार उठा के मारा है, गेंद जाएगी वहां पे और इनका अर्धशतक पूरा होते हुए। क्या पारी खेली है यहाँ पे, अपना बैट उठाए। हाँ जी, उठाइए और लुफ्त मजा लीजिए। 50 रन 36 गेंदों में 4 फोर्स और 3 सिक्सेस हैं। हाँ, क्या पारी खेली है। एट 136 का स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं। 103 पर 3 ये टीम की स्कोर, लेकिन अफ्रीका में तो ये लाजवाब पारी खेली उन्होंने 36 गेंदों में और अभी जीत के कदर पे खड़े हैं आपकी क्रेजी क्रूज। हाँ, हल्की सी शायद ये आउटसाइड एज गई है, लेकिन एक फील्डर जरूर मौजूद है वहां थर्ड मैन की दिशा में। रन्स आ रहे हैं, रन्स बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें तो कोई उनको रोक नहीं है, क्योंकि जहां से भी हो रन जरूर आ रही है। ये देखिए अभी रिक्वायर्ड रन रेट 3.19 और करंट रन रेट है 7.19, तो डिफरेंस बिल्कुल ये तो पासा पलट गया। अभी 17 चाहिए 32 गेंदों में। हाँ, फिर से धीरे से पीछे खेला। ये श्याम दौड़ना चाहते थे, श्याम को बोला नहीं जी नहीं, 1 सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा सा ना मैं ही खेल लेता हूँ। लेकिन हर बारी करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से खेल सकते हैं। 17 चाहिए अभी 31 गेंदों में, तो कोई जल्दबाजी में नहीं कर सकते, ये आराम से जीत सकते हैं यहाँ से। देखो स्लॉट स्वीप करने की कोशिश, ये लाइन से थोड़ा सा बेमुश और रन आउट का भी अपॉर्चुनिटी था वहाँ पे। एलबीडब्ल्यू का शाउट, रन आउट की अपॉर्चुनिटी। यही तो गेम है क्रिकेट का, जो हम एंजॉय करते हैं। 22 एक्स्ट्रास आ चुके हैं अभी तक। 15 ओवर हो गए खत्म, 5 ओवर बाकी है और क्रेजी क्रूज 104 3 विकेट के नुकसान पे। It was a good last over for both the parties, I believe. 15 overs done here.
Crazy Cruise are now 1-0-4 for 3. And now they need 17 of 30. This is a huge appeal. The umpire also acknowledged the appeal, raising up his dreaded finger. Shyam has to go back to the pavilion now. He is trapped right in front of the wicket. He couldn't judge the line of the delivery, and that was just just a complete corner there. It is one of the most easiest தண்ணி வேணா கொண்டு வர decision சொல்லுங்க I சார். feel that umpire could have made. Pitched right on the leg தண்ணி வேணா immediately the umpire says, yes sir, you are OUT, Mr. Sham, you have to go back to the pavilion. So the fourth wicket is down. Crazy Cruise are 104 for 4. A wicket has come down finally. Around 22 grabs a wicket of the very first ball that he took. And what a good first ball that was to trap Shyam LBW right in front. But Rafiq Ahmed is still there on 50 of 38 at the other end. Can they do some different? Can they create a gob in a batsman's mind here? Because they need now 16 more runs to win this contest in 28 balls. So can they make a match out of it? And this Kings Lords 11 SANDOS Cricket Academy with you never know if something can be spun here, if they can be made to think twice. But they need this wicket of Rafiq Ahmed, who's at the under and is playing a gem of an innings for his team, Crazy Cruise. Around 22, slowly running into ball to Joker Surya 7. I really love this name. Around 22 to Joker Surya 7. Two more. Both numerics are actually getting repulsion onto each other. 22 onto 7. This battle is so much enduring sometimes, isn't it? There's nothing actually, but the name of the battles. Again now, fifth ball of the 16th over. He's played it inside out. Is it inside out? This has been into perfection from Joker Surya 7. In the first match also versus Grandiose Cricket Club, he also played a very nice 20 plus runs. I think around 23 or 25, and now he's also showing how he can be trusted, flight that delivery, and gives little bit of room on off and middle, and drives it to perfection to find that gap towards a long offense for 4. And now the equation has come down to 12 of 25. There shouldn't be any pigeons. There shouldn't be any cat among the pigeons as of now. But if they can get this wicket, as I mentioned, on a non-striker Rafiq Ahmed, then the story might just be a little different. But as of now, they are very much well poised for a good win here. Last ball of the 16th over. Outside off stump, slashes it away towards the sweeper cover. There is a fielder being strategically positioned. So just 1-1. You'll retain the strike. 16 overs done. Crazy Cruise are 1-1-0 for 4. The 16th over. 4 overs 11. 4 overs 11. Sir, bowler name, sir. Keeper. Sir, bowler name. Akash. Right up over.
16 ओवर के बाद 111 4 विकेट के नुकसान पे ये हवा में गेंद 2-3 बाउंसेस नहीं जाएगी दंदनाते हुए, लेकिन उनको मिल जाएगा थोड़ा सा रन यहाँ पे, 1 रन जरूर। और ये आकाश एस अभी फिर से फ्लाइट करने की कोशिश थी, नॉन स्ट्राइकर को चीरती हुई ये जाएगी लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन। अभी सिंगल फिगर्स में आ चुकी है, सिर्फ 8 रन चाहिए उनको 21 गेंदों में, ये आसानी से खत्म होना चाहिए अभी यहाँ पे। लेकिन ये रफीक अहमद की विकेट जरूरी है अगर कुछ कमबैक करना चाहते हैं। वो फुल टॉस बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप और उनको दिशा दे दी है मिड विकेट के रीजन पे, और ये 4 रन, सिर्फ 4 रन की और है जरूरत अभी। लेकिन अभी तो इतना कह भी सकते हैं कि रफीक अहमद आउट भी हो गया ना, तो भी ये गेम होनी चाहिए क्रेजी क्रूज के नाम। लेकिन रफीक अहमद नहीं चाहेंगे कि वो पेविलियन का रास्ता नापे, वो रास्ता नापेंगे जब वो अपने टीम को जीत दिला देंगे। और एक बाउंस टप्पा खा के वो गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन के लिए। और देखिए 55 पर पहुंची कि 40 गेंदों में 2 बॉल और बाकी अभी 17 ओवर का, तो 100 बॉल पे अभी 117 हो चुका है। So after a short delay, we are back in action. They just need 4 runs now. Fighter delivery gives him. Is this the match? Is this? Where's the ball gone? The angle of the camera not being able to show us. Okay, rough
Catch your name. Ghana. Yo! Takes the wicket. Akash has an all important wicket of Rafiq Ahmed. He goes back to the pavilion after scoring 55 or 41. I'm really sorry. It's a commentator's curse, I believe. But Rafiq Ahmed, you have to blame yourself for that stroke. He gave himself so much of room to clear himself to play that stroke, only to play it down the throat of the fielder at long off. 117 for 5 with the wicket of Rafiq Ahmed. Is there a twist in the tail? I really don't know. They need 4 runs. They have 5 wickets in their head. It must be a little difficult as of now, as Ranjit Bishoy will come to the middle to join his partner and will be facing the last ball of this over. This wicket should have come little early. They will definitely believe, because at the moment, despite the fall of the wicket of Rafiq Ahmed, Ranjit Bissoy and Joka Surya 7 especially might believe that this is that they can squeeze this win out of the hands of Kings 11 Lords. Again, shaping up. It's down the ground. It's long. It's high. Is this the match? Oh, that's a wicket. That's a wicket. 2 balls, 2 wickets. Ranjit Bissoy is a goner. Oh, my absolute lord. We are talking of some emotions and for trying to find out the drama. And Kings 11 Lords are saying, hang on, they need 4 runs, but we need just 3 wickets now. Can we just make them smell the cat among the pigeons? Flighted delivery, wanted to hoik it over mid-wicket, but there was a fielder station who just placed himself very well underneath that catch to complete the formalities and give 2 back-to-back wickets to Akash Ayers, who finishes the first over at 3 for 7. It's 117 for 6 after 17 overs for Crazy Cruise. Dead ball. One 7 for 6 in 17 overs. Karun 22 has the ball in his hand. Can Not they out. do something out of it? There's a huge appeal, but the ball is striding down the leg side as Vicky Vignesh is the new batter who has come out to the middle to join Joker Surya 7, who's on 7 of 7, but 7 of 8 balls, but he'll be at a non-strike end. 1 run, but it's as a leg by, and it will not add up to the total of Joker Surya 7. But what a dramatic last over that was. 2 wickets in 2 balls. Again on that's a replay actually. And those are that. One second. Is it a wicket? Is it a wicket? And yes, of course, there is a review left. He was trudging back to the pavilion. But what dramatic what drama is getting unfolded here at the Vellore cricket ground. Where in Vellore, I was getting a little confused between replay and the live action, but probably it's going down the leg side. It has gone up to the third umpire. I am running out of words and synonyms and superlatives to describe this drama. This is turning at an absolute fashion of a cricket match. That loop-up delivery wanted to flick that ball. That ball hits his pad directly on that leg stump. He might just be in trouble. Waters is Vicky Vignesh. And now this has gone to the TV umpire. It's left onto his behest now to decide whether to give that Vignesh the red light or the green light. For the benefit of the doubt, I really don't know. There you go. That was a full toss delivery. He might have just been saved because that ball was spinning almost away. And you can see the leg stump is actually behind the foot of the back of the back leg. So he might just survive. He was going back to the pavilion.
Only then Joker Surya 7 made him realize that there is a review left, and then only he went upstairs. Otherwise, he was trudging right back to the pavilion. That sometimes you forget that technology is there to make you see the light at the end of the tunnel. And finally, he took it up. Now we are looking at some zooming in actions as the third umpire has been made to work it out. There you go. There you go. Immediately goes back without even thinking of what can be done here, because in his mind he was a goner, because he knew that he knew probably that he was a goner. You can now zoom out. You can now zoom out. He is still standing there along with Joker Surya 7, waiting for a decision to be made here. But whatever it is, it's a crazy. It's absolutely crazy how this is now panning out. He is going back to the pavilion. Has the decision been made here? That's out. I'm now getting over. I cannot go over of this. 3 runs more required. 3 wickets are left as that official signal of out has come out, and Vicky Vignesh has to go back to the pavilion. Crazy Crews are now 118 for 7 in 17.2 overs. One eight for 7. Arjun 22 has the ball in his hand, way outside off stump, and both the arms will be flapped, and it's a wide. So now they need just 2 runs to win this contest. Matters not making moves by him on the leg side. It's a full toss delivery. They will now get a 1 that will settle the score. Both the teams now have the equal scores of 120. And Joker Surya is on strike, and this should be easy. This should be very, very easy now, unless there is something under the drama getting unfolding. Can he get a hat trick and finish it off? I really don't know. That's happening. Oh, good ball. Good ball squares. Joker Surya 7 up completely. I was talking about a hat trick. You never know. That's the last thing you want to see as you're shaping up to pick up that one run from that bowler. Again, onto him on the leg side. That's a wide, and that will be the match all done and dusted. And Crazy Crews will win this contest by 3 wickets. But this was a match which was full of excitement, emotions, and drama all across. Right from the very first ball, mind you, the spin was introduced. Very good bounces, and as the ball went for a wide, it didn't have to go towards the boundary. As soon as it was a wide, it was a win, because they just needed 1 run to win this contest. So Crazy Crews, they win this contest by 3 wickets versus Kings 11 Lords